IEEE members, Y chair, and dear students, a very warm good morning to all of you. Today we all have gathered here for the IEEE R10 event, Mother Nature Needs Her, Climate Action in Education Program 2023, organized by Amity University, Haryana in association with Uttar Pradesh section, Y Affinity Group, sponsored by IEEE Region 10. So, Mother Nature Needs Her Climate Action in Education program. This will provide a platform for meaningful dialogue and knowledge sharing among the educators and stakeholders. This will also be providing lots and lots of information. So, I, Dr. Shweta Tripathi from ECE department, will extend a very warm welcome to all the participants over here. So, let's start our proceedings. Dr. Vikas Madhukar, Pro Vice Chancellor, Amity University, Haryana, specializes in finance and strategies and holds his doctorate in international finance from Kurukshetra University. Dr. Madhukar has emerged as an influential academician renowned for his remarkable contribution, exemplary leadership. He is presently working as a Pro Vice Chancellor of Amity University, Gurugram, and Dean Faculty of Management Studies, Director, Amity Business School, and also heading the Amity Innovation Incubation, leading an entrepreneurship and strong startup initiatives at university. He has mentored several students in translating their ideas into business models and provided startup support through Incubation Center. His current research generally includes the strategies and leadership, organizational development. He has a vast experience of more than 24 years in teaching, training, research, consultancy and administration. He has produced more than 12 PhDs and contributed more than 80 research papers in different national and international journals and the conferences, and authored many articles in Times of India, Financial Times, and published more than 5 books on strategies and other management areas. His research endeavors have resulted in groundbreaking findings published in various journals. Madhukar sir, now the dais is yours. Kindly guide us and enlighten us. Kindly share your opening remarks. Thank you so much, Dr. Shweta. And on behalf of our Honorable Chancellor, Dr. Singh Chauhan, sir, and on behalf of entire Amity University Haryana fraternity, on my personal behalf, I extend a very warm welcome to all participants at this very important discussion seminar, Mother Nature Needs Earth, Climate Action in Education Program 2023. So I'm thankful to IEEE WIE Chair Uttar Pradesh Section India for giving Amity University Haryana this opportunity and also giving me an opportunity to be there to present my view on such an important topic of sustainability. Frankly speaking, this is the most appropriate time for us to be awake and look at the various important aspects of sustainable development. As we know that the climate change is threatening the very existence of our planet and its inhabitant, and it becomes quite important that as a university we should look at a very comprehensive sustainability program, keeping in mind a vision of at least next 30 years. When I talk about a climate sustainability program, the few things comes into my mind immediately, that a climate sustainability program, it should be firstly aimed at reducing the carbon emission, second promoting renewable energy sources, third conserving natural resources, and all this should be aimed to creating a cleaner and healthier environment for future generation. So basically, the three important aspect which comes under a sustainability development program are environmental sustainability, social sustainability,
and economic sustainability. And this is how our 17 SDGs have been grouped under these three broader set framework of sustainability. So looking at the environment sustainability, obviously, the universities and institution across, they are required to focus on reducing the carbon emission, and we must focus on kind of programs and courses we are offering at our universities directed towards producing the kind of manpower which is required to contribute in the concerned sustainability domain. If I talk about my own university, MIT University, Haryana, we are a sustainable campus. Our university is the first university of country and second of Asia to get a USGBC LEED Platinum certificate in 2016. And since then, we've been focusing a lot on all those issues of environmental sustainability, social sustainability, and economic sustainability. We are a campus which is a zero waste water discharge campus. We have been ranked globally at 63 in SDG 6 water conservation by Times Higher Education Impact Ranking. We have been ranked at 63 globally in SDG 7 affordable and clean energy. The green building which is constructed here at university, and the kind of structure which is there is providing a kind of adequate sunlighting where the minimum use of power is there. We have our own power generation by way of installing solar plant at the university. We are meeting our approximately 20% of energy requirement through solar. We have a biogas plant here in the university, which is utilized to provide electricity while in the various corners of the campus. We have a great biodiversity. We have more than 70 kind of butterflies in the campus. We have peacock dancing. We have herbal garden here, and the full 110-acre campus. When you come here, you will find the kind of natural beauty which has been created in the lap of Aravali Hills. Looking at the other perspective, if I talk about the social sustainability, so we have we have been working again in this particular area. We have good gender diversity in the campus. We have 50% faculty members; those they are females. So as the case with the proportion of boys and girls among student, are 50% student strength and 50% student strength boys are girls. The ratio is almost equal, and this is equal across various programs. And we have a well draft environmental sustainability policy and a carbon emission plan where the university is planning to reduce the dependence on fossil fuels, and where we are looking forward to a zero carbon university maybe by 2035 onward. So there is a complete sustainability plan which has been worked out at the university and providing a greater direction to the universities. If I talk about the various programs, I was talking about uh, the program and courses. We have MTech Solar and Alternate Energy, a very popular program which is producing the professional in the area. We have a lot of outreach activities the university is doing in the different area of sustainability, whether it is poverty, it is zero hunger, it is quality education, or anything. Our researcher, faculty, and scientists, they are working on important research project in collaboration with
institution in India and also with the international institution. And the important research projects, the research project on which they are working is creating a very positive impact on the society as a whole. The research findings and data has been shared across in the collaborative research, and then they work on the findings and discuss on this, that how the research can contribute and make a positive impact with regard to the different sustainability goal. So, looking at the three important aspect which I talked about, the environmental sustainability, social sustainability, and economic sustainability, as a university, we are truly contributing in all of the area, and there are a few of good program we have started. We have collaborated with the Presidio Graduate School of US to offer MBA program in sustainability management, which we are offering both in full time and part time mode. And of course, there are various initiatives, as I was mentioning, about the sustainable strategic policy, which we have drafted under the environment and sustainability policy, which is providing an adequate direction to university to work in the different area. So, in conclusion, I would say that climate sustainability program is a vital tool in addressing the urgent issue of climate change. And as a university, I think our role is foremost important in terms of creating awareness and imparting knowledge and sensitizing people to work on the various agendas of sustainability, so that we should be able to reduce the carbon emission, conserving natural resources, and promoting all good sustainable practices towards a sustainable future for not only for ourselves but also for future generation. So I would like to congratulate to IEEE Uttar Pradesh section for organizing such a wonderful event, and I'm happy to see the expert, those they are participating, Dr. Shailendra K. Mandal, who is Associate Professor, Department of Architecture and Planning, National Institute of Technology, Patna, Dr. Avdesh Pandey, who is founder and CEO of Third Eye, Dehradun, Mr. Rakesh Jan, Department of Electronics and Communication, Gitanjali Institute of Technical Study. I'm looking forward to have a very meaningful discussion, and I'm sure that the eminent resource person, they will provide the kind of input which will ignite the minds of our all participants. With this few word, I once again extend a very warm welcome to our eminent speaker, and I'm looking forward to have a very fruitful discussion in this seminar. Thank you and all the best. Thank you so much, sir, for beautifully putting how Amity University is participating in sustainable development with so many programs, solar energy, environmental sustainability, sustainability management, and various SDGs being followed by Amity University, like the environmental, social, and the economic sustainability. Thank you so much, sir, for your enlightful talk and motivating talk. Moving ahead, we have Dr. Shalind. Dr. Shalind Kumar Mandal is an architect and city planner, presently working as an associate professor in Department of Architecture and Planning at National Institute of Technology, Patna. He has completed his B.Arch from Bihar College of Engineering, presently National Institute of Technology, Patna, from Patna University in 2002, and Masters of City Planning from IIT Kharagpur in 2005, and PhD from NIT Patna in 2018. He has over 17 years of teaching and research experience and more than 2 years of industry experience. He has done number of research and consultancy projects with organizations like UNICEF, Ministry of Housing and Poverty Alleviations, Ministry of Railways, NOAA, USA, and GIZ. GIZ. So his professional and academic work in focus in the discourse of climate change adaptation, urban resilience and sustainability, environment and ecology, coastal resiliency and sustainable urban planning, especially on how locally embedded
adaptation planning can be driver of the transformation process of urban resiliency and sustainability. He has been awarded Fulbright Fellowship to work on climate change adaptation and water sustainability at University of Arizona, Tucson, USA in 2013 and 14. He is an expert reviewer of first and second order draft, working group second and third, contribution to IPCC sixth assessment report ARC. He has traveled extensively around the world related to his research work and scientific paper presentation. He has presented his research work in all the six habitable continents of our planet. I welcome you, sir, over here. And sir will be talking on the talk. His talk is basically on the crucial role of climate science in empowering vulnerable population. So, welcome, sir. Kindly address the audience. Thank you, Dr. Shweta Tripathi, for giving uh, my introduction and inviting me also for this uh, talk. So, and thank you to Pro Vice Chancellor, Professor Dr. Vikas Madhukar, to elaborating what institute can do in order to take care of the sustainability issues through the different angle, the economic, social, as well as environmental. So I'll just share my slide. Give me one sec. I hope my slide is visible to all of you. Yes, sir. Yes. Thank you, ma'am. Good. So once again, thank you very much, Dr. Sweta Tripathi, ma'am, and the background who has done a lot of work in order to do that, and Miss Ava, and then the IEEE UP section on this one. Just I thought what would be my talk in order to ignite the young mind who is in the technical as well as in the different profession pursuing to uh, have a degree. So that's why I chose the topic, the crucial role of climate science in empowering the vulnerable population. When I talk about the vulnerable population includes the each of the human being living on this planet, whether they live in the developed country, developing country, or least developed country. All are vulnerable when we talk about the climate science. So what I try to do is that we'll talk about the introduction, what is the climate and climate change, to have the understanding. Then I will quickly touch upon the planetary boundaries. This is the slide where we will talk about where the human can contribute in order to take care of the climate change. Then why is climate change is a problem? What causes the climate change? Consequences of climate change, mitigation and adaptation to climate change, and 21st century challenges in an interconnected world. This is especially I put this slide for the younger mind who will be listening my talk. So there are interconnected challenges for the 21st century. Then the solution at a different level, at a government level, at the state level, at the district level, at the individual level. And then I will talk about the key direction for future climate research, because at very right time, Dr. Shweta ma'am has organized this conference. So COP28 is going to organize from today only. So it's a very right time to have a discussion on the climate change, and we'll see the entire world what they are doing in order to take care of the climate science and changes. So when we talk about the climate, it's a long-term pattern, and it gives us
the filling of that area. So when we talk about the climate, it refers the long-term weather patterns. So each location, a specific location, has its own the type of the climate. So that is the climate we refer. When we go to some places, so we want to know that what is the climate there, whether it's hot, dry, wet, summer, cold, and all. So based that is done based on the past at least 30 years data and more than that data also. So that is the pattern which defines the climate of that special location and all. But when we talk about the climate change, the climate change is the shifts in the average condition. Suppose if average temperature is suppose 28 degrees centigrade, but it is changing, that the average temperature shift is changing, then the minimum, maximum precipitation, then whenever the average is shifting over a period of time, it is generally said in the climate science is more than 30 years, then we say that climate is changing. That means the shift of that the average has taken either left or right. In our case, in nowadays, it is taking in the right side. So that is the climate change when we talk about. So if you look into this pictorial representation here, so a small changes in average will lead to the big changes in extremes, and it has already been advocated into the IPCC. If you are not aware of, I would encourage all of the participants you look into the IPCC. That the IPCC is the organization based in Geneva, which has the which has the research backing in order to produce the information for the policymaker, for the scientists, and it is the document where almost all the researcher working into the climate science has contributed for the report. And recently that AR6, the assessment report 6 has come up. So we will be talking about something about the AR6, the assessment report 6, where we will see what will be the future scenario and why it is like that. So if you look into the global average temperature, if you're taking from 1850 to 2019, we can clearly see that it is having the rising trend. Okay, why from 1850 to 2019? If you look, that is the observed data, that is not the projected data in this one, and it is showing very clearly we are having the rising trend in the global temperature. So temperature is already started rising. So this is observed. Okay, now coming to the another slide, we talk about the 1.5 degrees centigrade and 2 degrees centigrade. Means all over the world, government is taking initiative in order to take care of the climate. So they are restricting that it should not go beyond the 1.5 degrees centigrade. Even though we will do the lot of initiatives in order to take care of the climate change, we will be witnessing the 1.5 degrees centigrade, that the changes in the temperature. Or if we want to restrict it, then we need to do a lot of initiatives in order to take care of the climate change. So if you look into this graph, it shows if you don't do it, there are policies. All government has come up with the policies to take care of the climate change. Even though that policies will be implemented, we will not be able to take care of the 1.5 degrees centigrade. That means, if you put into the simple word, whatever the policies all around the world they have made in order to take care of the climate change is not going to take care of the warming at 1.5 degrees centigrade and 2 degrees centigrade. That means we need to take more action in order to limit the warming to 1.5 degree and centigrade. 2 degrees centigrade. And even though we will do that, it will not be immediate result.
So NDC is the nationally determined contribution. The all country has to decide the NDC in order to take care of the climate change, and that is being discussed at the COP, and the COP 28 is going to be held in UAE from 30th of November only, from today itself, where all the stakeholder would come and talk about their plan and policies. Now this come to this slide. This is the SSP1, SSP1, 2.6 to 4.5, 7 and 8.5. What is the SSP? SSP is the scenario, and it is from the AR6 report. What it says, even though we take the 1.9 scenario, we are going to see the global warming trend. Means even though we take the very less scenario, we are going to see that it is not going to decline in that the global warming. It is going to increase the global warming. And if we take that 1.9 is the very low emission scenario. Similarly, 2.6, 4.5, 7 and 8.5. If we take the 8.5, that is a high emission scenario where a lot of development happens. A lot of development will happen. A lot of fossil fuel burning will be there. That will lead to the very, very high rises in the temperature, and this will lead to the global warming. And we know already we have witnessed this year the substantial amount of the high temperature all around the globe, from United States to Europe to the Japan. They have witnessed, even some of the countries have witnessed 1 in 100 years. Means that in 100 years they have not experienced that kind of temperature they have experienced this year. So that is the kind of influence it is going to make into our climate. Now I mentioned about the planetary boundary. What is the planetary boundaries? Planetary boundaries where the 9 boundaries has been identified by the Stockholm resilience scientists. And what they try to do is, what are the area where human can intervene and they can take care of the boundaries. And the situation is not good. In 2009, only we have crossed the 3 boundaries. There was the climate change, and then the other the biosphere and the other things were there. In 2015, we have crossed the 4 boundaries. That means we have crossed the limit of that boundary to the upper limit. Means if you won't do anything, then that boundary is going to affect our life. And if you talk about the 2023, this year, we have crossed the 6 boundaries. That means we have not taken enough steps in order to take care of the boundaries which are there. And climate change earlier was in 2009. It was at a very a stage where a lot of initiative we could have taken. We could have controlled this one. But now in 2023, you can see that it has gone beyond the limit. It is going into this one. And if it crosses that limit, then it will be very difficult to come back. That's why a lot of the dialogue and debates going on all around the world. And you know already we have witnessed that the Paris Agreement was not signed by the United States. Is one of the polluters of of our planet. So that is the geopolitical things has not taken into the consideration the amount of effort which is needed. Now they are signatories, because when the Biden became the president, they signed, okay, we will be also doing into this one. So this means we are not in a good position if you compare from the 2009. Now, earlier we have crossed the 3 boundaries. In 2023, we have crossed the 6 boundaries. So that means we are not able to take care of the changes which we are experiencing. So why the climate change is a problem? Why it will take care? It is posing a lot of threats to our population. There are many regions, and pertinent to that many regions are
the warmer temperatures. And you know, the when temperature has risen, it has the back loop triplication into our food system, our ecosystem, our other chain. So this is going to influence the entire ecosystem where we live it, and that would result into the lot of problem. Then devastating storms, lot of storms comes, and you know, even the developed countries not safe. Even the storm comes, and they lot of urban flooding is there in United States, in Japan, and all. So it does not mean whether you are rich countries or poor country. A climate change is going to affect the entire population. Then increased drought, the warmer temperature will be the increased drought, and then drought would leads to the different kind of, we will not have the enough food in order to take care of our own population. Then the mass migration would occur, people will not get an opportunity, it will migrate from one place to another. Then warming, rising ocean will warm up, and a lot of the ice would melt, and then again sea level rise. Then a lot of extinction, a lot of the things is in the extinction phase. A lot of the wild animal, a lot of birds and other things is in extinction, and it is going to affect the our own ecosystem. Then food shortage, the now climate change has put a lot of stress on the food shortage, because many of the countries is struggling hard. Even the inflation in UK has gone up because food is not available. Food, they have to import a lot of food in order to feed the population, increase in health issues, and then the poverty and forced migration. These are the things which is a real problem when you talk about the climate change. Now, since we are young, I am assuming that all of the young population is watching this seminar. So, if you look, if any child born in 2020, this is the very good graph from the IPCC. So if any child born in 2020, it is going to experience the very high intermediate or the emission scenario. That means that child who has born 3 years back is going to have the lot of the issues related to the climate change. Those who born in 1980 is going to face the climate change. Even those who born in 1950 is experiencing the climate change. That means the any population who lives on this planet is going to face the climate change. This is a very good this one, and I would encourage all of you, the IPCC, you go through the IPCC report. It's a very scientifically backed report in order to make you aware of what things going wrong, in which direction it is going wrong, why it is affecting the people's life. So if you look into the risks to human and ecosystem,
I think it was now it's visible. Some technical problems Oh, might be there at your end. I'm No issues, extremely sorry. sir. No issues, sir. Um, Shalan, sir, could you summarize your talk? yes, I can do that. Just Yes. will you able to see my slide? Yes, sir. Yes. So I will take 5 minutes. Okay. So 11:15 I will wind up. Is it okay? Yeah. You need more than less than Yes, sir. that. Yes, sir. Yes, sir. Please 5 minutes continue. is okay. Okay. Yes. So let us concentrate on the things which is relevant. So it is going to affect this one. So these are the causes of the climate change. We know already that because of the burning fossil fuel, deforestation, and land use changes, industrial. This one. So if you look into the CO2 emissions, it has been increased drastically after the industrial revolution, and because of that we are experiencing the climate changes. So Club of Rome in 1972 they published, this was the event which has mentioned about the climate change. They did mention about in 1972 it was published, we are going to see that the temperature rise, and definitely we are going to see that. So it has been already projected in 1972, and that's the effect we are already experiencing it. So if you look into the climate suitability all around the world, most of the marshland is not suitable to live into that condition. And every reason, if you look, then the population which is vulnerable to the climate change, and then the add-on population which will be vulnerable to the climate change. So in our case, in Asia, 63 million population is already vulnerable, and the 16 million would be add-on in 2040. And if you look into the extreme event, this is showing the kind of extreme event we are experiencing all throughout the coastal event. So we are going to experience the sea level rises at a very alarming rate. Then talk about the Indian scenario. In Indian scenario, we are seeing that the annual temperature is also increasing, even though we are having the irregular the precipitation patterns and all. So what are the consequences? If you look into the temperature and carbon dioxide, it has having the very direct correlation, the temperature and the carbon dioxide emission. So we know already because of the carbon dioxide emission, the temperature is going to rise. And these are the some of the pictorial which I choose in order to make you aware that in 2020, this was the glacier scenario, in 2019 this. And because of the global warming, that ocean is going to heating up, and if ocean is heating up, it will lead to the sea level rises, and then higher tides and more urban flooding we would see that. And it will also have an effect on the air quality, heat related illness, longer stronger allergies seasons, increasing risk of insect and food borne disease. And then it is going to affect the food and farming, because the stresses from increased weather extremes will lead to the drought condition. Then again the food and farming would be a problem. So what are the things we could do in order to take care of the climate? Then we need to have the climate resilient pathways, which includes the governance and the risk perception and the economic resources and financial investment to take care of the climate hazards, natural capital, human capital, and the physical capital, so that we will take care of the climate change. And we have already seen that the Pro Vice Chancellor sir has mentioned about the sustainable development goals, and we are trying hard in order to meet the sustainable development goal till 2030. So 21st century challenges in interconnected world, it lead to the water, economic, food, energy, political, health, and migration. So this all is interconnected, and problem would be seen in each of these areas. So what is the solution? If you talk about the technological solution, the renewable energy storage technology, wetland protection and restoration, sustainable agriculture, restoration of grassland, coastal and aqua habitat protection. These are the technological solution where technology can play a role in order to take care of the climate change. Nature-based solution is now coming up, the reforestation, soil management, carbon capture and storage, low carbon transport, green hydrogen, and climate engineering.
But when you talk about the individual level, that is very important one. We have to reduce the energy consumption, switch to the renewable energy, drive less and drive green, waste less, natural carbon solution, and we need to have the shared knowledge in order to take care of the climate change. So these are the future areas where the climate research can be one of the tools in order to take care of the climate change, like plausibility and equity of scenarios, access to effects of mitigation and adaptation measure, determine how to support sustainable use of ocean, provide new knowledge regarding water, biomass, land, ecosystem, and their services. So these now machine learning, artificial intelligence, the in agriculture, forestry industries, all these areas need to be considered in order to take care of this one. So I will wind up through this one. And the Barack Obama has said, we are the first generation to feel the impact of climate change and the last generation that can do something about it. Otherwise, our future generation will not be able to do anything where we can take care of the climate change. So that's my presentation, and thank you very much. And I don't know if Dr. Shweta ma'am would say, I will take some question or comment, whatever the things is there. Yes, sir. Thank you so much, sir, for this igniteful talk. So, the key challenges in climate sustainability are so many. And could you please let us know about the significance of carbon neutrality? So, Yes, that's a very good question you have asked, ma'am, and whoever has asked. Look, like the what I mentioned into this one in NDC, through the NDC, people are trying to address the greenhouse gas emission and all. Why the governance is focused on the carbon neutrality unless until if we are not going to achieve the carbon neutrality, then we are not going to reduce the greenhouse gas emission. That's why people are more focusing, government are more focusing on the carbon neutral. If we are having the society, the carbon neutral, that's the Amity University has got the platinum rating and all. So I'm sure they are not putting a lot of carbon into the atmosphere. So if we target at the carbon neutrality, it will lead to the greenhouse gases. So whatever we do, the first step would be the carbon neutral, and then it will reduce the greenhouse gas emission. That's why the lot of focus is on the carbon neutral. okay. So yes, sir. One more question has come, but Yeah. this will be more suitable with the other candidate. So this Okay. is how can agriculture and food system contribute to or Mhm. hinder climate sustainability? How Is can agriculture and the food agriculture, food agriculture system and can contribute? foods. Oh, look, but very simple example would be the agriculture pattern. If suppose some area is not having the good amount of the rainfall, and we are growing the water intensive crop, then it will lead to the food problem. So Yes. so and So we many are pesticides and things are which we are using is not good that for is, health. yeah, that is not good point, and that is also a sustainable food habit. And I'm sure that the other doctor is already there. If we consume the 1 kg of the meat, it will take 300 liters of water, and while we consume 1 kg of the vegetable, it takes only 30 liters. So it's So less. a kind of effect on the environment. So we need to choose the lifestyle. I was in the conference at the food security in Ireland, and the then prime minister of Ireland, she was a lady, and she said, when we came to know that the climate change, the food is contributing towards the climate change, she became vegan. She didn't want to consume the meat because it is contributing more to the climate change. So we need to take the different lifestyle in order to take care of the climate change. Thank you so much, sir, for giving such a nice presentation.
You have, I think, incorporated all the topics related to the climate consequences, mitigation, their adaptation, how 21st century can be interconnected to the world and their solutions at different levels. So, through our collaborative efforts of the scientists and the policymakers, community leaders, uh, they all need to work towards the fulfillment of sustainability towards the climate. So definitely I would ask my audience to attend if possible COC conference, which is starting today, and will be Yes, more okay. focused Yeah, yeah, towards our sure. work. So moving ahead, sustainable health also has its emphasis on the profound connection between the nutrition and well-being equine. So with this, our next speaker is Dr. Avdesh Pandey. Uh, Sir, so sir is the senior consultant radiologist and nuclear medicine expert diagnostic, curing impossible things for the patient. And his qualifications are MBBS from Rachi University on June 1991, then DRM Diploma in Radiation Medicine, University of Bombay in July 1994, DNB Diplomate of National Board, MNAMS, member of National Academy of Medical Sciences, PhD, Yoga and Naturopathy, Bharat Virtual University for Peace and Education from in August 2021, PhD. So, and then various achievements sir has acquired, which are so many publications in national and international journals. Twice he was awarded as a Young Scientist Award, more than 400 oral presentation in national and international flora. He's also the senior consultant and head of IIMS, cured more than 15,000 patients of COVID through integrated medicine, cured more than 1,000 patients of diabetes through integrated medicines. The positions which currently sir is holding is he's the chief of triple IMS Shibrati Medical College, co-founder of HIMS, Derabassi Chandigarh, founder and CEO of Third Eye, DAP Institute of Integrated Medical Sciences, Dehradun, CEO and Chief Consultant of IINMAS Group of Diagnostic Center, New Delhi. So, sir will be talking on the topic sustainable health. Let food be thy medicine. Sir is one of the has the profound knowledge in this particular topics. So, may I take this privilege to ask you, sir, to kindly present. Thank you, Dr. Shweta, and thank you, Amity University Vice Chancellor Sir ko namaskar. And I, my talk will be on let food be thy medicine. But I was listening to what uh, uh, people were talking, so I'll be little bit. I'll be talking about what has already been talked, and I'll be using English, Hindi, Sanskrit, and Urdu wherever required. And the people who are listening, Definitely, sir. हमारे they audience yes, sir. जी ऑडियंस से बहुत वो आ रहा है कि हिंदी में बात की जाए, तो चूंकि मातृभाषा है Yes, sir. इसलिए वो भी यूज करना ठीक है. We were talking जी, sir. about sustainability. This world is no more sustainable. Let's face facts. This is not sustainable because basics have been lost. 8.7 million species on planet Earth. 8.7 million, including humans, which consists of one species, Homo sapiens. Apart from Homo sapiens, there are 8.7 million species existing. We actually don't know how to coexist. The problem is we were sent to this world as caretakers. हम अपना मालिकाना हक समझ बैठे हैं. हमें लगता है हम मालिक हैं इसके. मालिक तो एक ही है. आप मालिक नहीं हैं, आप केयर टेकर हैं, लेकिन आप अपने आप को मालिक समझ बैठे हैं. और जितना भी हम साइंस और साइंटिफिक डेवलपमेंट्स की बात करें, बेसिक्स कभी चेंज नहीं कर रहे. देखिए, जैसे आप कार्बन न्यूट्रलिटी की बात कर रही थी,
हमें मोस्ट ऑफ द ऑडियंस कार्बन न्यूट्रलिटी नहीं जानती है। सिंपल सी चीज जो हमें सबसे पहले बतानी जरूरी है, बिकॉज दीज बेसिक्स आर रिक्वायर्ड फॉर स्टूडेंट्स ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल, आपको पेड़ नहीं काटना चाहिए। व्हाट इज द साइंटिफिक बेसिस? नहीं, पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, इतने सब कुछ सस्टेन करते हैं, हम अपने आप को डिसकनेक्टेड फील करते हैं। हाउ डू यू कनेक्ट? मैं आपको एक कनेक्शन दिखाता हूं। You breathe जी in air and you breathe out air. When you breathe out air, most of it is carbon dioxide. This carbon dioxide is taken up by these plants. Through photosynthesis and through the photon transfer, carbon dioxide is broken into carbon and oxygen. C plus O2. The O2 is given back to you to breathe properly. And environment को sustain करने के लिए, the carbon is retained by the plant. This carbon with the moisture from the environment combines together. तो क्या बन गया? CH2O. 6 molecules of CH2O become C6H12O6 glucose. So the plant gives you oxygen to breathe, it gives you glucose to eat. That is the connection between you and the plant. ये हमें इंट्रोड्यूस करना चाहिए सेकेंड टू थर्ड स्टैंडर्ड में, सो दैट आपके भाव में परिवर्तन आए। बात ये है ना, भाव की बात वो तब तक नहीं समझेंगे जब तक अथर्व वेद का पृथ्वी सूक्त, ये जितने लोग एनवायरमेंट की बात कर रहे हैं, मेरी उनसे विनती होगी कि अथर्व वेद का पृथ्वी सूक्त जरूर पढ़ें। अगर संस्कृत जानते हैं तो जरूर पढ़ें, और अगर संस्कृत नहीं जानते हैं तो उसका वो अवेलेबल है, हिंदी वर्जन अवेलेबल है, गूगल पे ही अवेलेबल हो सकता है, होगा, मैं जानता नहीं हूं, लेकिन जरूर होगा। उसको पढ़ना बहुत जरूरी है। आपका क्या रिलेशनशिप है पृथ्वी से? माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्वीया, जब तक वो भाव नहीं आएगा। हम पांव भी जमीन पे ऐसे रखें कि मां को चोट ना लगे, ये भाव जब तक नहीं आएगा तब तक हम बड़ी बातें करते रहेंगे और बड़े कॉन्फ्रेंसेस पे जाते रहेंगे, देश विदेशों का नाम लेते रहेंगे, चेंज होगा नहीं। You have to be the change which you want to see in the environment, in the world. You have to be the change. You first have to change yourself. Unless we do that, आप देखिए ना, वेजिटेरियनिज्म क्यों चाहिए भाई? आप अनसाइंटिफिक हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन फूड खा रहे हैं, आप अनसाइंटिफिक हैं। प्रकृति ने जो नॉन वेजिटेरियन एनिमल्स को बनाया है, उनके हाथ में क्लॉज हैं चमड़ी फाड़ने के लिए, आपके हाथ में है? उनके दांत बाहर निकले हैं, ये गड़ाने के लिए चाहिए, आपके हैं? अगर नहीं है तो प्रकृति ने बनाया नहीं है आपको, और हम बंतु बन गए हैं। हमें लगता है उपभोग की स्थिति है। द प्रॉब्लम इज देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कंज्यूमरिज्म एंड शोषण और पोषण में फर्क है। शोषण क्या होता है, पोषण क्या होता है, इसको समझने के लिए वही फर्क है जो पर्यटन और तीर्थाटन में है। अगर आप तीर्थ स्थान में तीर्थाटन के लिए जाते हैं, आपका भाव डिफरेंट होता है, और पर्यटन कंज्यूमरिज्म बिहेवियर है। जब तक हम कंज्यूमर बने रहेंगे तब तक इस वर्ल्ड में वो चेंजेस नहीं होंगे। आई एम सॉरी टू से, मैं बहुत सालों से रायो डी जेनेरो से अभी तक फॉलो कर रहा हूं कि एक्चुअली ये बड़े बड़े यूएन के मीटिंग्स, इसके बाद हुआ क्या? जो चेंजेस हुए हैं वो नगण्य हैं। अगर आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो इससे बहुत ज्यादा चेंजेस होने चाहिए थे। अमेज़न बेसिन को हम ऐसे काट रहे हैं सोयाबीन उगाने के लिए ताकि हमारे जानवर खा पाए और हम फिर उस जानवर को खा पाए। अमेज़न बेसिन इज द लंग्स ऑफ द प्लैनेट। जब तक कोई उठ के ये बात नहीं करेगा, जब तक वो चिपको आंदोलन जैसी बातें नहीं होंगी, तब तक हम ईटिंग मीटिंग मेटिंग एंड चीटिंग करते रहेंगे।
चेंजेस होंगे नहीं। आई एम सॉरी टू से, मुझे इस बात का बहुत रोष है कि ये साझी विरासत है। ये पृथ्वी सिर्फ भारत की नहीं है, सिर्फ अमेरिका की नहीं है, सिर्फ अफ्रीका की नहीं है, ये साझी विरासत। जितना हक अमेरिकन प्रेसिडेंट को बोलने का है, उतना हक मुझे भी है। तो मैं अपना वॉइस एमिटी के थ्रू रेज करना चाहता हूं कि आप जो कर रहे हैं वो बहुत ही कम और बहुत ही नाकाफी है। कोई भी ऐसे चेंजेस दिख नहीं रहे हैं। अब तक अगर रायो डी जेनेरो से अब तक अगर आप सीरियस होते, या जिन लोगों के हाथ में सत्ता है अगर वो सीरियस होते, तो क्लाइमेट में बहुत कुछ चेंजेस दिखते। तो ये सिर्फ लिप सर्विस है, इसके बियॉन्ड कुछ नहीं है। लेट्स फेस फैक्ट्स। मैं थोड़ा क्षुब्ध होके बोल रहा हूँ बिकॉज मेरे इमोशंस, मेरे भाव इससे अटैच्ड हैं। आई एम सॉरी। नाउ कमिंग टू सस्टेनेबल हेल्थ, आपको लगता है इतने केमिकल्स लेने के बाद हेल्थ सस्टेनेबल रहेगा? नो, नो। मैं इंटीग्रेटेड मेडिसिन, मैं मॉडर्न मेडिसिन प्रैक्टिस करता हूं। मैं एक रेडियोलॉजिस्ट हूं। आई प्रैक्टिस मॉडर्न मेडिसिन। We are the ones who do PET CTs, we are the ones who do MRIs, a CT scan, an ultrasound. We are the ones who diagnose a disease. लेकिन उसका क्या फायदा हुआ? डायग्नोज करके हमने भेज दिया, ट्रीटमेंट के बाद 6 महीने के बाद पेशेंट फिर आया, क्या वो ठीक हो गया? नहीं, वो और वर्स हो गया। ये देखते देखते हमें काफी साल हो गए। एंड कम कोरोना, कोरोना जैसे ही आया, उस समय आपको याद होगा ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। इससे बड़ी बात नहीं हो सकती है। आप कभी किसी को ये नहीं लगा कि ऑक्सीजन की कमी अगर हो गई है वर्ल्ड में, पूरे विश्व में ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी हो गई है, ऐसा एक बार भी नहीं लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे कोई अंडरस्टैंडिंग में कमी हो? हम तो वो देखते ही नहीं है। हमें सिर्फ बाहर दोष नजर आता है, हमें अपने अंदर दोष नजर ही नहीं आता है। मैं आपको बेसिक बात बताऊं, बेसिकली जितने भी स्टूडेंट्स, जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आप अंदर क्या लेते हैं और बाहर क्या छोड़ते हैं? मैक्सिमम लोग ये बोलेंगे हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इस एक चीज ने कोरोना टाइम में बहुत हार्म पहुंचाया है। आप बेसिक्स भूल गए हैं। आप अंदर हवा लेते हैं, ऑक्सीजन नहीं लेते हैं। ये जो खंडित दृष्टि और खंडित दृष्टिकोण है किसी भी चीज को देखने का, इसको परिपूर्ण करना पड़ेगा। इसी को इंटीग्रेटेड मेडिसिन कहते हैं। नहीं तो मॉडर्न मेडिसिन, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, न्यूट्रिशनल साइंसेज, ये सब में हम डिवाइड करके रहते हैं और हम एक साथ आते नहीं हैं। वी आर सपोज टू बी हीलर्स। हमें, अगर हमारे पास पेशेंट आए, हमें हील करने की स्थिति में आना चाहिए। इसके लिए एक सर्वज्ञ हो, विशेषज्ञ से काम नहीं चलेगा। आपको सर्वज्ञ होना पड़ेगा और सर्वज्ञ के लिए आपको अपने एंटेना ऑफ लर्निंग खोलने पड़ेंगे टुवर्ड्स अदर फॉर्म्स ऑफ हीलिंग, नॉट थिंकिंग दैट यू आर ग्रेट एंड द रेस्ट आर ऑल स्टूपिड। तो कमिंग बैक टू लेट फूड बी दाई मेडिसिन। If your food is fine, medicine is not required. If your food is not fine, medicine is of no use. कहने का मतलब ये है कि ये जो मेडिसिन आप खा रहे हैं, टैबलेट्स खा रहे हैं, इसका कोई बहुत काम नहीं है। एंड दे आर देयर फॉर मैनेजमेंट, नॉट फॉर क्योर। जब हम क्योर की बात करते हैं, आपने सुना होगा सीवी में, क्योर्ड सो मेनी पेशेंट्स। Modern medicine talks about managing a patient, not curing a patient. We cure a patient. कैसे? The basic scientific understanding, basics है नहीं। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ, या जितने भी स्टूडेंट सुन रहे हैं, कभी आपने गौर किया, हम सीड्स खाते हैं। चावल क्या है? सीड है। दाल क्या है? सीड है। रोटी क्या है? सीड है। सीड हैज द पोटेंशियल एनर्जी टू बिकम अ ट्री, हमें पता है, इसीलिए हम सीड्स खाते हैं। सीड को आपने बॉईल कर दिया, दाल आपने बॉईल कर दिया, तो उसमें से, बर्तन में से निकाल के जमीन में गाड़ देंगे तो पेड़ उग जाएगा? सोचिएगा।
नहीं उगेगा। क्यों? इट इज डेड फूड। मैं अभी तक वो साइंस ढूंढ रहा हूं कि डेड फूड आपको लाइफ कहां से दे रहा है। डेड फूड विल गिव यू डेथ, लाइव फूड्स विल गिव यू लाइफ। 8.7 मिलियन स्पीशीज हैं, एक और स्पीशी बताइए जो अपना खाना पका के खाता हो। हमें ये बातें समझनी पड़ेंगी। जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, 1 किलो चना पेट पेट भर के 20 लोगों का पेट भर सकता है, लेकिन 1 किलो चने की दाल मैक्सिमम 1 या 2 लोगों का या 3 लोगों का पेट भर सकती है, अगर पेट भर के खाना है तो। हमें जब तक ये बातें नहीं समझ में आएंगी, तब तक रोज सुबह होगी, रोज शाम होगी, उम्र यूं ही तमाम हो जाएगी, हम बातें करते रहेंगे, कुछ भी चेंज नहीं करेगा। आप देखेंगे हम कैसे क्योर करते हैं, बाकी लोग कैसे नहीं क्योर कर पाते हैं। द बेसिक अंडरस्टैंडिंग हैज टू बी देयर। मैं कोरोना का जिक्र करते हुए जरा आगे बढ़ूंगा, क्योंकि डिजीज एक्स इज ऑलरेडी देयर, चाइना में दस्तक दे चुका है। बहुत ज्यादा दिन नहीं है जब ये भारत में आएगा, और वही स्थिति आने वाली है जो कोविड टाइम्स में आई थी। इसलिए सबको ये अवेयर होना जरूरी है कि एक्चुअली करना क्या है। हमने 15,000 पेशेंट्स कैसे बचाए? हमने तो कोई दवा नहीं यूज किया, 1 रुपया चार्ज नहीं किया, एक भी दवा नहीं यूज किया, और चौथे दिन 99% पेशेंट्स जॉगिंग करवाया उनको। चौथे दिन, द डे ऑफ फीवर इज डे 1, मैं ये मानता हूं। चौथे दिन उनको जॉगिंग करवाया। कहने का मतलब ये है कि ये चीजें हैं बहुत सिंपल, हमने बहुत कॉम्प्लिकेट किया है, कभी साइंस के नाम पे, कभी इसके नाम पे, कभी उसके नाम पे, बहुत कॉम्प्लिकेट किया। सिंपल 10,000 बीमारियां हैं नोन टू मैनकाइंड, 9,985 टू बी स्पेसिफिक। इतनी ही बीमारियां हैं। इससे ज्यादा इंसान को सबसे पहले इंसान अपने ह्यूब्रिस से नीचे आना पड़ेगा। द ह्यूब्रिस ऑफ मैनकाइंड इज ऑलमोस्ट मेकिंग द वर्ल्ड गो टू हेल। द होल वर्ल्ड इज गोइंग टू हेल, बिकॉज हमें सबसे ज्यादा द मोस्ट इंटेलिजेंट स्पीशी ऑन प्लैनेट अर्थ हम अपने आप को बोलते हैं। ये सर्टिफिकेट देने के पहले हमने किससे परमिशन लिया है? क्या हमने कभी किसी कुत्ते से पूछा कि बॉस मैं ये सर्टिफिकेट ह्यूमन काइंड को देने जा रहा हूं, क्या मैं दे सकता हूं? जानवर बीमार पड़ता है तो पहला काम क्या करता है? खाना छोड़ता है। और इंसान, ये नहीं खाना है तो ये खाना है, ये खाना है। पेट में महिषासुर घुस गया है, महिषासुर मर्दिनी को लाना पड़ेगा। जब तक ये बात नहीं समझ में आएगी, तब तक यही करते रहेंगे। दिल्ली में वो डॉक्टर अच्छा है, इंग्लैंड में अच्छा है, अमेरिका में अच्छा है, घूमते रहेंगे आप, कभी ठीक नहीं होंगे। बेसिक्स पे आना पड़ेगा, बेसिक्स से बात समझनी पड़ेगी। नाउ कमिंग टू कोरोना अगेन, 9,985 डिजीजेज एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड। इसमें इतने डिजीजेज हैं, इतनी हीलिंग पद्धतियां हैं, सबके अलग अलग विचार और विचारधारा है, दृष्टि और दृष्टिकोण है। बट हाउ डू वी रिकंसाइल? सो लेट्स कम टू बेसिक्स अगेन। There are only two ways of getting sick. Pathogen makes you sick. Pathogen is a pathology generator that makes you sick. So pathogen will either come from outside, जैसे कोरोना, it has come from outside, or an inside cell will become pathogenic, जैसे कैंसर, जैसे autoimmune disease, जैसे डायबिटीज, जैसे ब्लड प्रेशर। ये इनसाइड सेल है जो पैथोजेनिक हो गया। यही दो तरीके हैं बीमार पड़ने के, तीसरा कोई तरीका नहीं। So if a pathogen is coming from outside, you have to understand the body. The understanding of human body as far as modern medicine is concerned, I'm sorry to say, since I'm a radiologist, we जब जब कोई प्रेग्नेंट होता है, the diagnostic test for pregnancy is done by a radiologist. अल्ट्रासाउंड से हम कंफर्म करते हैं प्रेगनेंसी है कि नहीं है। बाकी सब तो लैब टेस्ट है। लैब टेस्ट रॉन्ग भी हो सकते हैं। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती है, तो हमें दिखता है। एंड जब ब्रेन डेड हो जाता है, वी आर द वंस हु डिक्लेयर टू द न्यूरोसर्जन कि ये ब्रेन डेड है, तब वो जाके बोलता है द पेशेंट इज ब्रेन डेड। तो हमें ये इस बॉडी के बारे में, किसी भी डिजीज के चलते क्या क्या होता है,
रेडियोलॉजिस्ट को बहुत ठीक से पता होता है, क्योंकि कोई कोई ऐसी डिजीज आप नहीं जानते होंगे जिसमें रेडियोलॉजी का रोल नहीं, इसलिए हमें वो ट्रेनिंग मिली हुई है। तो मॉडर्न मेडिसिन हम ठीक से जानते हैं, लेकिन मॉडर्न मेडिसिन क्योर कर नहीं पा रहा है। तो कमिंग बैक टू दिस, अगर बाहर से कोई भी पैथोजन आया, हाउ विल दिस बॉडी रिएक्ट? ये ब्रह्म है, ये जो आपको ऊपर से नीचे तक दिख रहा है, अहम ब्रह्मास्मि, ये ब्रह्म है, ये रिएक्ट करेगा। क्या रिएक्शन होगा? ज्यादातर फीवर होगा। फीवर क्यों? वाई हैज द फीवर हैपेंड? फीवर हैज हैपेंड टू किल द पैथोजन। पूरी दुनिया में लोगों ने क्या किया है, चाहे वो एलोपैथी हो, आयुर्वेद हो, होम्योपैथी हो, सब ने कोविड टाइम्स में क्या किया? फीवर को कम किया। फीवर को कम करने के नए नए कॉन्फ्रेंसेस, नई नई दवाइयां, फीवर को कम किया। क्या हमने बॉडी को हेल्प किया कि हार्म किया? बॉडी ने टेम्परेचर बढ़ाया पैथोजन को मारने के लिए, हमने टेम्परेचर कम कर दिया। वी शॉट द मैसेंजर, नंबर वन मिस्टेक। हमने क्या किया? फर्स्ट डे जो आपको करना चाहिए, फर्स्ट डे सिर्फ पानी पिलाइए। फीवर से मौत नहीं होगी, फीवर से डिहाइड्रेशन होगा। और फीवर में थोड़ी तकलीफ होगी। अगर गाजा पट्टी पे बॉम्ब गिर रहे हैं, आप अपने ड्राइंग रूम में सो नहीं सकते हैं। तो वॉर इज गोइंग ऑन, बॉडी में वॉर चल रहा है, तो थोड़ी बहुत तकलीफ होगी और वो झेलनी पड़ेगी। आप इमीडिएटली आराम आराम के चक्कर में ना पड़े। फर्स्ट डे 7 से 8 घंटे में फीवर सेटल डाउन कर जाएगा। फीवर तब तक सेटल डाउन नहीं करेगा जब तक इस ब्रह्म ने एक एक वायरस को मार नहीं दिया है। और 7 से 8 घंटे में ये हो जाता है 99% पेशेंट्स में। जो 1% पेशेंट्स जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं, जैसे रीनल फेलियर है, ये लोग हो सकता है 20 घंटे, 22 घंटे, 24 घंटे भी लग सकते हैं, लेकिन 24 घंटे में फीवर जरूर चला जाएगा। नेक्स्ट डे बॉडी क्या करेगी? ये ब्रह्म नेक्स्ट डे क्या करेगी? आपको सिर्फ पानी देना है और कुछ नहीं देना है। कोई भी खाना नहीं देना है, क्योंकि खाना विल इंक्रीज द इन्फ्लेमेशन। हमें इन्फ्लेमेशन डिक्रीज करना है। और जानवरों से सीखना है कि जब वो बीमार पड़ते हैं तो खाना छोड़ते हैं, हमें भी खाना छोड़ना चाहिए। तो दैट इज हाउ वी लर्न फ्रॉम एनिमल्स। सेकेंड सेकेंड डे ये बॉडी क्या करेगी? जो जो सेल्स अफेक्टेड हो गए हैं पैथोजन से, उनको भी मारना है बॉडी ने। सो व्हाट विल द बॉडी डू? बॉडी तेजी से ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन कम करेगी। और हमने क्या किया? ऑक्सीजन दे दिया। ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके घूम रहे हैं। करना क्या चाहिए था? आप अंदर ऑक्सीजन फेवर्स कंबशन। जिन लोगों ने 7th स्टैंडर्ड पास किया है उनको पता होगा, ऑक्सीजन जब प्रिस्टली वाला जो चैप्टर पढ़ा था कि ऑक्सीजन प्रिस्टली ने निकाला है, एनीवे, तो वो इट फेवर्स कंबशन, आग लगाती है। आप हवा लेते हैं, हवा में 20% ऑक्सीजन है। इस ब्रह्म को पता है उसमें से कितना ऑक्सीजन निकालना है, कितना नहीं निकालना है। दैट्स मोर इंपॉर्टेंट, नहीं कितना निकालना है, क्योंकि ऑक्सीजन विल फेवर कंबशन। तो आप जैसे ही ऑक्सीजन देंगे, निमोनाइटिस होगा। आप हवा दीजिए। हवा कैसे देंगे? आप पेट के बल लेटा दीजिए पेशेंट को। 15 मिनट के अंदर 40% ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन 98% आ जाएगा। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। प्रॉब्लम क्या है? आज के दौर में लोगों के पास पेशेंस नहीं है। इंस्टेंट मैसेजिंग, इंस्टेंट चिप्स, इंस्टेंट कॉफी के जमाने में पेशेंस सिखाना मुश्किल काम है। आपको 15 मिनट पेशेंस रखना पड़ेगा। इस ब्रह्म के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। 15 मिनट में 98% आ जाता है अगर आप पेट के बल लेटाते हैं, बिकॉज दोनों नॉस्ट्रिल्स खुल जाते हैं। नॉर्मली आप देखिए, चेक करिए, आपका एक ही नॉस्ट्रिल चल रहा है, दूसरा नॉस्ट्रिल बंद है। जब आप पेट के बल लेटाएंगे, दोनों नॉस्ट्रिल चल पड़ेगा, डबल हवा ले रहे हैं आप। आपका ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन 15 से 20 मिनट में नॉर्मल आ जाएगा। पेशेंस रखिए। हमारे पास पेशेंस नहीं है। आईसीयू में जाएंगे, वेंटिलेटर पे लगा देंगे, ऑक्सीजन लगा देंगे और सोचेंगे कि ठीक हो गया। प्रॉब्लम वही है। दूसरे दिन फ्रूट्स खाना है, और जितना फ्रूट्स खाना है, जूस नहीं पीना है। जब तक दांत है तब तक जूस नहीं।
तीसरे दिन नमक खाने का मन करेगा, तो खिचड़ी तीसरे दिन खा सकते हैं दोपहर को, और चौथे दिन जॉगिंग के लिए तैयार हो जाइए। ये तीनों दिन आपको 5 लीटर पानी पीना है, 2 घंटे धूप में रहना है, फ्रूट्स सेकेंड डे ये खाना है, थर्ड डे भी खाना है, और फोर्थ डे से यू आर नॉर्मल अगेन। सो 99% पेशेंट्स ऐसे अपने घर में बैठ के बिना कोई दवा लिए ठीक हो सकते हैं, बिकॉज योर फूड इज राइट एंड योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बॉडी इज राइट। हम 3 दिन में डायबिटीज ठीक करते हैं, मैक्सिमम 3 days। वी डोंट टेक मोर देन 3 days टू क्योर डायबिटीज। क्योर का मतलब है सारी दवाइयां बंद, ब्लड शुगर नॉर्मल। कैसे? बाकी लोग कैसे नहीं कर पा रहे हैं? द ओवर डिपेंडेंसी ऑन साइंस एंड द अंडर डिपेंडेंसी ऑन द विज्ञान दैट यू नो। विज्ञान इज नॉट साइंस, विज्ञान इज योर विशेष ज्ञान, दैट इज विज्ञान। कोई भी संस्कृत का वर्ड का पर्यायवाची शब्द दूसरे किसी लैंग्वेज में हो नहीं सकता है, हो नहीं सकता है। मिलता जुलता हो सकता है। तो विज्ञान इज विशेष ज्ञान, और ये विशेष ज्ञान आपको सब जगह नॉलेज गेन करने से विशेष ज्ञान आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, डायबिटीज इज नॉट अ ब्लड शुगर डिजीज, ब्लड शुगर इज एन इफेक्ट ऑफ डायबिटीज। कार्य और कारण देखते हैं ना, कॉज एंड इफेक्ट। द इफेक्ट इज ब्लड शुगर राइज, द कॉज इज नॉट ब्लड शुगर राइज। पूरी दुनिया की दवाइयां ब्लड शुगर को ऊपर नीचे करने के लिए है, कॉज को कोई भी एड्रेस नहीं कर रहा है। हम जब कॉज को एड्रेस करते हैं, हम क्योर कर लेते हैं। ये कोई भी कर सकता है। द कॉज इज हाइपर इंसुलिनीमिया। आपको हर आधे घंटे पे कुछ खाना है। ओ आई कैन अफोर्ड, आई एम गोइंग टू 5 स्टार फॉर लंच, तो जाओ खाओ मरो, और कोई चारा नहीं है। क्योंकि आपको ये बात समझना पड़ेगा कि फूड जितना हम खाते हैं उतना रिक्वायर्ड नहीं है, उतनी रिक्वायरमेंट है नहीं। वाई कांट दिस बी योर ब्रेकफास्ट? क्योंकि आप लोग का ये था, वाई कांट दिस बी, दिस इज सस्टेनेबल। इसमें कुछ भी नहीं है जो कुक्ड है, इसमें फ्रूट्स हैं, कट फ्रूट्स हैं, ये सस्टेनेबल है। कुक्ड फूड सस्टेनेबल नहीं है। जब तक हम वो खाते रहेंगे और सस्टेनेबल ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते रहेंगे, उसको हिपोक्रेसी कहते हैं। यू हैव टू चेंज योर सेल्फ टू चेंज द वर्ल्ड। जब तक हम चेंज नहीं करेंगे, तब तक सुबह होएगी, शाम होएगी, उम्र यूं ही तमाम हो जाएगी। सो विल स्टार्ट विद द स्लाइड्स। आई एम सॉरी, मेरे पास कितना टाइम है मैडम, सो दैट यू नो वी कैन। सर कर लेते हैं। आपकी टॉक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आई कैन सी द रिमार्क्स इन द यूट्यूब एज वेल। सो यस प्लीज, बहुत अच्छा आपने बताया इंटरमिटेंट फास्टिंग का कि क्यों ज़रूरी है, और फीवर के रिस्पेक्ट में तो आपने बहुत ही सही बताया। बट सर क्या ये बच्चों के लिए भी सूटेबल है कि किसी अगर के लिए, छोटे बच्चे हैं किसी के लिए फीवर से उनको भी मौत नहीं कोई? होगी, फीवर से मौत नहीं होगी। और अच्छा, फीवर, अगर आप पानी डालते रहेंगे, पानी देते रहेंगे, हॉस्पिटल में भी क्या करते हैं, ड्रिप चलाते हैं। आइडिया इज, पानी जब आप देते रहेंगे, फीवर मतलब आग लगी हुई है, आग को आप बुझाएंगे कैसे? पानी से बुझाएंगे ना, तो पानी पीजिए ना। इट्स वेरी सिंपल। मैं एक्चुअली, मेरा पर्पस ये है कि मैं साइंस जितना कॉम्प्लिकेटेड, लंबे चौड़े वर्ड्स यूज करके लोग उसको कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, मैं उसको सिंपलिस्टिकली लोगों की समझ में आए, वो अपनी बात समझ पाए, अपने बॉडी को समझ पाए। वी आर, आप अगर हमारा यूट्यूब में भी देखेंगे, वी मेक डिजीज वेरी सिंपल। कैंसर क्या है, हमने बहुत सिंपली किया। अगर आप समझ लेंगे, मेरे यूट्यूब वीडियोस देखिए और घर पे ही ठीक हो जाइए, हमें कांटेक्ट भी करने की जरूरत नहीं है। हम वही बोलते हैं कि आप हमारे वीडियोस देखें, हम आप ही के लिए बनाते हैं। हम चाहते हैं कि इस बॉडी के बारे में ठीक से समझ लोगों को हो, और इस पे ना जाए कि नहीं वो डॉक्टर अच्छा है, वो डॉक्टर अच्छा है, उधर वो स्वामी जी अच्छे हैं, अच्छा योग कराते हैं। भाई योग से होगा क्या? रोगानुसार योग हम हर थर्सडे करते हैं। किस रोग में क्या योग करना है, कितना योग करना है और कितना नहीं करना है, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। हमें क्या है ना, बाकी लोग बोलते हैं आप योग कर लो, आप ठीक हो जाएगा। क्या योग करो, कितना योग करो, योग है क्या, ये कोई भी नहीं बताता है। So people are generally confused as far as health is concerned.
दे थिंक दैट ओनली एक्सपर्ट्स नो. मैं इसलिए बोल रहा था, जब तक आप विशेषज्ञ रहेंगे तब तक आप मेरा मेरा करते रहेंगे. जब आप सर्वज्ञ हो जाएंगे तब आप यू यू आर मोर टुवर्ड्स गिविंग रादर देन थिंकिंग दैट यू आर अ बिग मैन और थिंग्स लाइक दैट. एनीवे, so coming to the slides that we start with the slides. Let food be thy medicine. So the real understanding of the human body. Next slide, please. Yes, the real understanding of the human body is, ये जो बॉडी आपको दिख रही है, ये फिजिकल बॉडी, मॉडर्न मेडिसिन की ये लिमिट है. उनको सिर्फ फिजिकल बॉडी दिखता है, उनको बॉडी कार जैसी दिखती है. बॉडी कार जैसी है नहीं. कार जब बंद होती है तो वो डेड होती है. आप कभी भी डेड नहीं होते हो. दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू रियलाइज. एज फार एज जितने मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर्स ये सुन रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं, ये बॉडी, फिजिकल बॉडी इज, डोंट कंपेयर इट विथ अ कार. कार मूव्स ऑन न्यूटोनियन फिजिक्स, दिस मूव्स ऑन क्वांटम. इट इज इनकंपेरेबल, यू कांट कंपेयर. कार्बोरेटर खराब हो गया, कार्बोरेटर रिप्लेस कर दो, कार चल पड़ेगी. ये चीज खराब हो गया, बैटरी खराब हो गई, बैटरी रिप्लेस कर दो, कार चल पड़ेगी. लेकिन ये नहीं चलेगा, ये रिप्लेसमेंट से नहीं चलेगा. जो आपको ऊपर वाले ने दिया है उसको ठीक करने की स्थिति में आई है, उसको आपको मालूम होना चाहिए हीलिंग पद्धति से उसको ठीक कैसे करना है. गॉल ब्लैडर में स्टोन आ गया, मॉडर्न मेडिसिन में क्या ट्रीटमेंट है? काट के निकाल दो. यूट्रस में फाइब्रॉइड हो गया, काट के निकाल दो. दैट इज नॉट द वे हाउ गॉड मेड द बॉडी. तो साइंस उसको नहीं बोलते, दैट इज बुचरशिप. अगर गॉल ब्लैडर में स्टोन आ गया, काट के निकाल दो. साइंस उसको बोलते हैं कि गॉल ब्लैडर में स्टोन है, क्या आपके पास कोई तरीका है कि स्टोन निकल जाए और गॉल ब्लैडर फंक्शन करने लगे? दैट इज साइंस. दैट इज साइंस. तो हम साइंस की दुहाई दे के कि नहीं साइंटिफिक है, ये है, वो है, हम स्यूडो साइंस को बढ़ावा दे रहे हैं. साइंस को ठीक से समझना जरूरी है. और साइंस इंग्लिश बोलने वालों की जागीर नहीं है, नहीं है. इंग्लिश बोलने वाले ज्यादातर झूठ बोलते हैं. आप देखेंगे जब रास्ते में एक्सीडेंट होता है तो लोग कार में से निकल के इंग्लिश बोलना शुरू करते हैं. भारत में दे वांट टू इंप्रेस अपॉन द अदर कि मैं करेक्ट हूं. मतलब इंग्लिश बोलने से आप करेक्ट हो गए. नॉर्मली इंग्लिश बोलने वाले क्या करते हैं? फैक्ट्स को चेंज करने का, फैक्ट्स को ट्राई करते हैं कि उनको मोड़ दिया जाए. फैक्ट्स चेंज करने से फैक्ट्स बदलते नहीं हैं. तो भाषा कोई भी आप यूज करें. यू शुड नो हाउ टू स्पीक वेरी गुड इंग्लिश. व्हेन वी स्पीक इंग्लिश, हम ब्रिटिशर्स को भी वो होना चाहिए कि यार इंग्लिश तो हम हैं, लेकिन हमसे अच्छी इंग्लिश भारत के लोग बोलते हैं. उनको ये शर्म फील, क्योंकि भारतीयों से बड़ा और भारतीयों से ज्यादा तेज मैं ये समझता हूं पूरे विश्व में और कोई नहीं है. क्योंकि योग की ताकत है. भारत एक योग भूमि है, बाकी सब भोग भोग भूमियां हैं. ये दोनों में फर्क ये है, योग भूमि भारत में हम शरीर में देश ढूंढते हैं और भोग भूमि में देश में शरीर ढूंढा जाता है. ये एक डीप स्टेटमेंट है, रियलाइज करिएगा. तो भारत एक योग भूमि है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, विष्णु पुराण में लिखा है. ये मैं सिर्फ बयान कर रहा हूं कि ऐसा लिखा हुआ है कि समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो भूभाग है वो भारत है और उसके संतान भारतीय है. ये मैं नहीं कह रहा हूं, विष्णु पुराण में लिखा है. तो भारत का डेफिनेशन विष्णु पुराण के टाइम में ही हो गया था. और विष्णु पुराण कंजर्वेटिव एस्टिमेट से 5,500 साल पहले लिखा गया है. वैसे मैं जानता हूं वो लाखों साल पुराना है, लेकिन कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स, टाइम की इतिहास में हमें ज्यादा कुछ मालूमात ये नहीं है. जो भी ब्रिटिशर्स ने कह दिया हमने मान लिया. एनीवेज, सो कमिंग बैक टू दिस बॉडी, द फिजिकल बॉडी दैट यू सी इज द अन्नमय कोश. आपने एक सेल से आपकी जिंदगी शुरू हुई थी, जाइगोट कहते हैं उसको. आपके मदर्स वूम में व्हेन अ स्पर्म एंड एन ओवम फ्यूज्ड, दे फॉर्म्ड अ जाइगोट. एक जाइगोट से एडवेंटिशियस मल्टीप्लिकेशन से आप बने हैं, न्यूट्रिशन से बने हैं. इसीलिए ये अन्नमय कोश है. इसको चलाता है
आपका प्राणमय कोश, आपका प्राण चलाता है। प्राण, ब्रीदिंग किक स्टार्ट्स प्राण। प्राणायाम लोगों को लगता है कि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज है, नहीं, नहीं। प्राणायाम इस प्राण का व्यायाम, पूरे एक एक सेल में आप प्राण का व्यायाम आपको कराना, उसको प्राणायाम कहते हैं। पीपल थिंक इट इज जस्ट अनुलोम विलोम एंड थिंक लाइक दैट, बिकॉज दे हैव नो कॉन्सेप्ट। और लोगों को कॉन्सेप्ट देने के लिए मैं देखता हूं कि यूट्यूब वीडियोस में भी किसी ने इतना बेसिक से एक्सप्लेन ही नहीं किया है, लोगों को आइडिया ही नहीं है। एनीवे, तो इसको चलाता है, इस अन्नमय कोश को चलाता है प्राणमय कोश, और प्राणमय कोश को चलाता है मनोमय कोश। अगर मैं अगर मैं अगर मैं किसी के प्रति कोई रॉन्ग न्यूज सुन लेता हूं, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, सांस तेजी तेजी से चलने लगती है अगर आप कोई रॉन्ग न्यूज सुनते हैं, क्योंकि मनोमय कोश प्राणमय कोश को इफेक्ट करता है और प्राणमय कोश अन्नमय कोश को इफेक्ट करता है। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस, देयर इज अ कनेक्शन। तो अगर आप किसी के लिए गलत सोचते हैं, आपकी प्राण धारा चेंज हो जाती है, आपके बॉडी की केमिस्ट्री चेंज हो जाती है, एक एक सेल की केमिस्ट्री चेंज हो जाती है। बी पॉजिटिव व्हाइल यू आर थिंकिंग। और पॉजिटिव थिंकिंग का सबसे बड़ी बात है कि सबको जीने का उतना ही हक है जितना आपको है, एक चींटी को भी उतना ही हक है। ये बात भारत की पूजा पद्धतियों ने सबसे पहले पकड़ी, जैसे जैनिज्म, आप देखिए ना। और जैनिज्म ही नहीं, भारत से 3 पूजा पद्धतियां निकली हैं, ये योग की ताकत है, योग से निकली है। योग एक नास्तिक दर्शन है, लेकिन जो तीनों पूजा पद्धतियां जो भारत में चलती हैं, योग से निकली हैं। ठीक से देखिए, यम नियम से जैनिज्म निकला है, ध्यान से सनातन निकला है, समाधि से बुद्धिज्म निकला है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये 8 अंग हैं योग के, अष्टांग योग कहते हैं इसको। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये सारी चीजें जो भारत में चलती हैं, योग से बड़ा बल नहीं और सांख्य से बड़ा ज्ञान नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूं। ये श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को बताया है। तो योग की ताकत पहचाननी बहुत जरूरी है। वो योग की ही ताकत है कि हमें इंद्रियों पे वश शुरू में ही सिखा दिया जाता है। इसीलिए अगर 10 बड़ी कंपनीज पूरी दुनिया में हैं, 7 के सीईओज भारतीय हैं। क्यों? क्योंकि इंद्रियों पे वश पहले ही सिखा दिया जाता है। ये काम करना है, ये काम नहीं करना है, इट्स नॉट ओके। कहने का मतलब यह है कि हमें भारतीय होने पे और भारतीयता पे फिर से गौर करना पड़ेगा, फिर से किसी को पढ़ाना पड़ेगा कि भारतीय होने का मतलब क्या है। एनीवे, कमिंग बैक टू दिस, तो अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, अगर ये तीनों एक ही लाइन में हैं, तो विज्ञानमय कोश खुल जाता है। विज्ञानमय कोश आपका विशेष ज्ञान है, जो आपने परा या अपरा विद्या से आपने लिया है, उसका मंथन हुआ है और तब आपका विशेष ज्ञान जागृत हुआ है, उसको विज्ञानमय कोश कहते हैं। और जब ये चारों एक लाइन में आ जाते हैं, तो आप आनंदित फील करते हैं और आनंदमय कोश खुल जाता है आपका। तो ये 5 कोश हैं। आप जब तक इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, तब तक सोल्यूशन की तरफ हम नहीं आएंगे। तो इट इज जैसे ऑटो इम्यून डिजीज है, अगर किसी को ब्रोंकियल अस्थमा है, या अगर किसी को मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, या जॉगरेन सिंड्रोम है, या इंटरस्टिशियल बाउल डिजीज है, ये सब लंबी चौड़ी नाम हम लेते हैं, क्योर तो हम करते नहीं हैं, लेकिन नाम बड़े लंबे चौड़े लेंगे ताकि पेशेंट डर के मारे डरा रहे कि हाँ भाई उसको ये डिजीज है। ये सभी चीजें क्योरेबल हैं और बहुत सिंपली क्योरेबल हैं, बहुत डिफिकल्ट नहीं है इसको क्योर करना। द बेसिक बल्कि सर अंडरस्टैंडिंग नीड्स टू बी देयर। जी। बल्कि सर अस्थमा तो लोग कहते हैं दमा, तो मीन्स दम के साथ ही जाएगा, और आपने कितनी बढ़िया बात कही कि एवरीथिंग इज क्योरेबल। हाँ, हमारा यस। शरीर ही इतना अच्छा बना है, वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स मशीन विच कैन क्योर एंड हील इन इटसेल्फ। तो बहुत ही जी। अच्छा आपने बताया सर, बताइए सर। जी। तो द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड
डिवाइस ऑन प्लैनेट अर्थ इज योर बॉडी। चक्कर ये हो गया है कि फोन्स आजकल स्मार्ट हो गए हैं और हम ढक्कन हो गए हैं। जब से स्मार्टफोन आ गए हैं हम खुद बेवकूफ हो गए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, रियल इंटेलिजेंस खोता जा रहा है। जब हम खोता ये बोल रहे हैं तो मैं हिंदी का खोता वर्ड यूज कर रहा हूं, क्योंकि पंजाबी में खोता कुछ और होता है। एनीवे, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो शरीर है ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। जब तक इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी क्योर की तरफ आप बढ़ नहीं सकते हैं। सिर्फ अन्नमय कोश को लेके क्योर की तरफ नहीं बढ़ सकते हैं। सो वी नीड टू हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिजीज प्रोसेस। और अन्नमय कोश को सेटिस्फैक्शन अन्न से मिलता है, प्राणमय कोश को प्राण से, विज्ञान से मिलता है, और आनंदमय कोश को आनंद से मिलता है। हम सबसे वंचित रहते जा रहे हैं क्योंकि इसी को हम लाइफस्टाइल बोलते हैं। इंद्रिय लोलुपता लोगों को कहां पहुंचा रही है? इंद्रिय सुख के लिए। मैं एक, चूंकि स्टूडेंट्स भी हैं इसलिए मैं क्विकली एक बात बोलूं बिफोर आई गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। क्विकली बात यह है कि 10 इंद्रियां हैं। इस 10 इंद्रियों को जो जीत लेता है उसको जितेंद्रिय कहते हैं। जितेंद्र मतलब इंद्रियों को जीत लेने वाला। ये 10 इंद्रियां कौन कौन सी हैं? आंखों से आप देखते हैं, नाक से सूंघते हैं, जीभ से टेस्ट करते हैं, कानों से सुनते हैं और हाथ से, स्किन से टच करते हैं। ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। द सेंस ऑफ साइट, द सेंस ऑफ हियरिंग, द सेंस ऑफ स्मेल, द सेंस ऑफ टेस्ट एंड द सेंस ऑफ टच। ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। आपको जितना भी ज्ञान है इन्हीं ज्ञानेंद्रियों से लिया होगा आपने। मैं आई एम डूइंग अ पीएचडी ऑन द पाइनियल ग्लैंड जो 6 सेंस की बात करता है। 6 सेंस खुलता कैसे है, मैं उस पर पीएचडी कर रहा हूं। पीएचडी इन रेडियोलॉजी ऑन द पाइनियल ग्लैंड मैं कर रहा हूं। एनीवे, तो ये 5 सेंसेस हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं। हाथ एक कर्मेंद्रिय है, पैर एक कर्मेंद्रिय है, मुंह एक कर्मेंद्रिय है, गुदा योर एनस एक कर्मेंद्रिय है, और सेक्सुअल ऑर्गन एक कर्मेंद्रिय है। तो 5 ये हो गए। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां। इनकी बाह्यमुखी पिपासा है। आप अगर देखिए, आंखें बाहर देखती हैं, आप अंदर नहीं देख सकते हैं। स्मेल आप बाहर करते हैं, अंदर नहीं कर सकते हैं। कानों से आप बाहर सुनते हैं, अंदर नहीं सुन सकते हैं। हाथ से आप बाहर टच करते हैं, अंदर नहीं टच कर सकते हैं। हाथों से आप बाहर ये छूते हैं, पैरों से बाहर चलते हैं, अंदर नहीं चल सकते हैं। ये सब की बाह्य मुखी पिपासा है। इसी को दशानन की स्थिति कहते हैं। रावण का नाम था दशानन। उसकी एक इंद्रिय लोलुपता कम होती थी, दूसरी खुल जाती थी। दूसरी, इसीलिए 10 सर कहते हैं। ये सांकेतिक है। नॉर्मली लोग फिजिकलिटी में फंसे हुए हैं। यार उसका 10 सर था तो किससे चाय पीता होगा, किससे खाना खाता होगा। फिजिकलिटी में हम फंसे हुए हैं। ये कभी नहीं सोचते हैं कि आपसे 10 गुना ज्यादा ब्रिलियंट था वो। आपकी सोच जहां पे खत्म होती थी, उसके 10 स्टेप आगे से उसकी सोच शुरू होती थी। मेरे कहने का मतलब है हमें सांकेतिक चीजें समझ, दीज आर क्रिप्टिक इंफॉर्मेशंस जो हमें समझनी पड़ेंगी। हर चीज का फिजिकलिटी में हम फंस जाते हैं और फिजिकलिटी से कुछ निकलता नहीं है। एनीवे, तो कमिंग टू दिस, तो ये दशानन कहते हैं। जब आपकी 10 इंद्रियों की बाह्य मुखी पिपासा ही रखेंगे आप, तो आप दशानन बन जाएंगे। और 10 इंद्रियों की ताकत, रथने की ताकत अगर आप में होगा, उसको दशरथ कहते हैं। जब आप वो बनेंगे तभी राम पैदा होंगे। इस देश में अगर राम को लाना है तो पहले दशरथ और कौशल्या बनना पड़ेगा माँ बाप को, तब जाके राम पैदा होंगे। तो हमें अपने में क्या चेंजेस लाने हैं बिफोर भी से कि नहीं राम आने चाहिए, ये आने चाहिए। आपको कैसे चेंज करना है, ये मैं एक सांकेतिक बात ये बोला हूं। और चूंकि एनवायरमेंट और डेवलपमेंट की बात हम कर रहे हैं, मैं ये समझता हूं वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड विच इज नॉट इवोल्यूटिंग, इट इज डिवोल्यूटिंग। वी आर नॉट, इवोल्यूशन की तरफ हम नहीं जा रहे हैं, हम डी इवॉल्व कर रहे हैं।
और उसको अगर इवोल्यूशन कहते हैं तो बड़ी अजीब सी बात है। एंड साइंस, द ह्यूब्रिस ऑफ साइंस क्लेम्स कि हमें ये करता है, हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। हमारे ख्याल से भारतीय परिप्रेक्ष्य में इसको देखना जरूरी है। जिन लोगों को वेदों का ज्ञान है, जिन लोगों को बहुत सी चीजों का ज्ञान है, बेसिकली भारत में प्रॉब्लम क्या हुआ है, स्टूडेंट्स के लिए मैं बोलना चाह रहा हूं। संस्कृत गई, संस्कृति चली गई। जब तक हम संस्कृत को वापस नहीं लेके आएंगे, संस्कृति वापस नहीं आएगी। इंग्लिश बोल के वेद नहीं पढ़ाए जा सकते हैं, और इंग्लिश बोल के भगवत गीता नहीं पढ़ाया जा सकता है। और सिर्फ भगवत गीता नहीं, 8 अलग अलग तरह के गीता है। अष्टावक्र गीता भी है, भगवत गीता भी है। ये सब चीजें आपको कैसे बिहेव करना है, वर्ल्ड में रहना कैसे है। लोग एक ये किताब के पीछे जाते हैं। हमारे पास तो लाइब्रेरी है, पूरी लाइब्रेरी है। आप पढ़िए और विद्वान हो जाइए, बहुत सिंपल है। एनीवे, सो मूविंग विथ लेट फूड बी दाई मेडिसिन। नाउ वी विल नॉट, अब विषयांतर नहीं होंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो ये अन्नमय कोश, अन्नमय कोश की कई डिजीजेस होती हैं, जैसे डायबिटीज। डायबिटीज माँ बाप का दोष नहीं है। जैसे ही पेशेंट को हम पूछते हैं आपको डायबिटीज है, इमीडिएटली ही विल ट्रांसफर द ब्लेम टू हिज पेरेंट्स। मैं तो फैमिली में है जी। मतलब मैं तो एक निरीह प्राणी, ऐसे चल रहा था, इस खानदान में पैदा हो गया, इसलिए डायबिटीज हो गया। आपकी जुबान पे लगाम नहीं रहा, इसलिए आपको डायबिटीज हुआ, ये कोई नहीं बोलता है। तो जुबान पे लगाम सबसे पहली चीज है जो सिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जुबान पे लगाम है तो 3 लोगों से वास्ता आपका कभी नहीं पड़ेगा। अगर जुबान पे लगाम खाने के लिए है तो डॉक्टर से वास्ता नहीं पड़ेगा, और अगर बोलने के लिए है तो पुलिस और वकील से वास्ता नहीं पड़ेगा। और इन तीनों से जिंदगी में प्रोफेशनली वास्ता ना ही पड़े तो ज्यादा अच्छा है। जुबान पे लगाम सीखना बहुत जरूरी है। जुबान पे लगाम नहीं है, इसलिए डायबिटीज है। अनलेस वी अंडरस्टैंड दिस, तब तक हम जीन्स में फंसे रहेंगे। हम जीन्स में तो फंसे हुए हैं, और जीन्स में फंसना अच्छी बात है, जीन्स के बारे में जानना अच्छी बात है, लेकिन लोगों को फंसाना ठीक नहीं है जीन्स में, नहीं तो उनको लगेगा कोई इलाज नहीं है। सो डायबिटीज इज अ रिजल्ट ऑफ इंसल्ट ऑफ फूड। फूड इज एन इंसल्ट टू द बॉडी, जो हम सुबह से लेकर रात तक करते रहते हैं। हर आधे घंटे पे हमको कुछ खाना है। अगर हर आधे घंटे पे कुछ खाने की स्थिति में रहेंगे तो कोई कारण ही नहीं, कोई कारण नहीं है कि आपको डायबिटीज नहीं होगा। जरूर होगा, जरूर होगा। बहुत आश्चर्य की बात होगी। अगर नहीं है तो आज नहीं है, कल होगा जरूर। तो हमें यह डिसिप्लिन लाना पड़ेगा कि 8 घंटे 2 जून भोजन, आपको भारतीय बनना पड़ेगा। भारत में ब्रेकफास्ट लंच डिनर की हम बात नहीं करते हैं। ब्रेकफास्ट लंच डिनर 76 साल पहले जब अब ब्रिटिशर्स गए, उनके साथ चले जाना चाहिए था। हमें भारतीय उसी समय, वी हैव टू डीकोलोनाइज द ह्यूमन माइंड। Unless we decolonize the mind, the physical body was free in 1947, but the mind is still cluttered. हमें लुटियंस डेली बहुत अच्छा लगता है, because we have a colonized mind. We don't have a decolonized mind. We have to decolonize our minds to actually come to a conclusion. Then हम actual आजाद होंगे। और इंडिपेंडेंस को स्वतंत्र कहते हैं। अगेन, स्व के तंत्र को समझना स्वतंत्र कहते हैं। इंडिपेंडेंस बहुत क्रूड मतलब है उसका। तो इंडिपेंडेंस डे को स्वतंत्रता दिवस हम जो कहते हैं, स्वतंत्र का मतलब है स्व के तंत्र को ठीक से समझना। दिस इज अ टेक्नोलॉजी। जिस दिन आप ठीक से समझ जाएंगे उस दिन इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, अदरवाइज डिपेंडेंट रहेंगे। इसीलिए उसको स्वतंत्र कहते हैं। एनीवेज, दैट्स अ वेरी क्रूड मीनिंग। मेरे कहने का मतलब है, कोई ऐसा वर्ड नहीं है संस्कृत में जिसका एग्जैक्ट पर्यायवाची शब्द दुनिया के किसी भाषा में है। मिलता जुलता है, मोर और लेस काइंड्स। एनीवे, सो अन्नमय कोश का डिजीज है। जब आप ज्यादा खाएंगे तो आप डिजीज होंगे। मैंने आज तक बिना खाए किसी को मरते हुए नहीं देखा, सब खा के मरते हैं। ये इतना सुंदर प्राणी, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये इतना सुंदर प्राणी, इसको लास्ट टाइम चावल दाल या बर्गर खाते हुए किसने देखा है? इसकी सुंदरता का कारण नेचुरल फूड है। नेचर से मिला हुआ फूड नेचुरल फूड है।
कुक्ड फूड नेचुरल फूड नहीं है। और इतना ज्यादा जो आपको ये दिखाया जा रहा है कि इतना आपको वैरायटी ऑफ फूड चाहिए क्योंकि आप कुक्ड फूड खाते हैं। मैं बोलता हूं एक बीच का रास्ता ये निकाले। कुक्ड फूड ऐसा नहीं है कि आपको नहीं खाना चाहिए, टेस्ट भी एक चीज है, टेस्ट भी एक इंद्रिय है, उसको भी सेटिस्फाई करना जरूरी है। सो व्हाट आई सजेस्ट इज, सोल्यूशन इज 50% of your food can be cooked food for taste. 50% food should be for nutrition and health. वो वो खाना होना चाहिए जिसमें ऊपर वाले की आग लगी है, जिसमें इंसान की आग लगी है, उस खाने में आग लग गई है। जिसमें ऊपर वाले की आग लगी है वो अच्छी है। ऊपर वाले की आग मतलब धूप, जो धूप में पका है वो अच्छा है। जो आग में पका है उसमें आग लग गई है, एंड दैट इज व्हाट कॉजेज inflammation. The word is inflammation. Inflammation means what? In flames. Where is the flame coming from? The flame is coming from cooked food. So 50% of your food, if it is cooked, 50% if it is raw, you will be in the pink of health. और भारतीय बन जाइए, 2 जून भोजन पे आ जाइए, सूर्यास्त के बाद भोजन मत कीजिए। आप देखिए ये सभी चीजें, और अहिंसा में विश्वास रखिए। ये क्लाइमेट सस्टेनेबल हो जाएगा, ये वर्ल्ड सस्टेनेबल हो जाएगा अगर आप अहिंसा में विश्वास रखते हैं। जितनी भी पूजा पद्धतियां भारत से निकली हैं उनका सबके मूल में क्या है? अहिंसा, परमो धर्म, ये मूल में है उनके। इसीलिए जब पूरे वर्ल्ड में हिंसा चल रही है, कभी ये इस पे बॉम्ब गिरा रहा है, उस पे बॉम्ब गिरा रहा है, आप देखिएगा एक समय आएगा जब भारत को आत्म शांति दुनिया में लाने के लिए, शांति बहाल करने के लिए भारत को उठना पड़ेगा, विश्व गुरु बनना पड़ेगा। तब जाके हम ये बता पाएंगे कि अहिंसा परमो धर्म। हिंसा सिर्फ चिकन और मटन खाने से नहीं होता है, हिंसा बातों से भी होता है, हिंसा विचारों से भी होता है। हम किसी के बारे में गलत सोच रहे हैं, वो भी हिंसा है। तो जब तक हम ये बात, और हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ रहे हैं, हम अपना ही बिगाड़ रहे हैं। हम खुद हेल्दी नहीं रह पा रहे हैं क्योंकि हम दूसरों के बारे में गलत सोच रहे हैं। इसलिए अगर सस्टेनेबल हेल्थ की बात करें, सस्टेनेबल वर्ल्ड की बात करें, आपको भारत के बेसिक्स पे आना पड़ेगा। अहिंसा परमो धर्म। जब तक आप इस पे नहीं आएंगे तब तक रोज सुबह होगी, शाम होगी, उम्र यूं ही तमाम हो जाएगी। So next slide, please. Yes, you look at on the left side of your screen there is cooked food. On the right side of your screen there is raw food. हमारे पास एक मीटर है, since we practice vibration therapy also, हमारे पास एक मीटर है जो एनर्जी लेवल चेक करता है फूड का। कुक्ड फूड का एनर्जी लेवल यूजुअली 0 होता है। रॉ फूड का आप देखिए, लुक एट द ऑरा ऑफ द रॉ फूड, दैट शोज द एनर्जी लेवल। और आप भोजन क्यों करते हैं? ताकत के लिए। भोजन करके, लंच करके नींद आती है तो वो फूड आपको भोजन दे नहीं रहा है, आपका एनर्जी चुरा रहा है। और आपको भोजन का क्या मतलब है? एनर्जी चाहिए आपको। एनर्जी कैसे मिलेगी? जिस भोजन से आपको नींद आती है वो भोजन बदल दीजिए। भोजन इज फॉर एनर्जी, इट इज नॉट फॉर स्लीप। अगर आपको नींद आ रही है दैट मीन्स वो भोजन आपकी एनर्जी चुरा रहा है, आप एनर्जेटिक नहीं रहेंगे। आप अन्नमय कोश में फैल जरूर जाएंगे लेकिन एनर्जेटिक नहीं रहेंगे। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो रॉ फूड is much better than cooked food. So 50% of your food has to be raw, 50% cooked. और ये महात्मा गांधी का तस्वीर सिर्फ नोटों पे नहीं, स्लाइड पे भी होना चाहिए। अहिंसा के पुजारी हुआ करते थे महात्मा गांधी, और इतना हिंसा कर रहे हैं, इतना चिकन खा रहे हैं, इतने जानवरों को मार रहे हैं। क्या हम एक्चुअली आर वी दैट हंग्री? वी नीड टू आंसर दिस क्वेश्चन टू आवरसेल्व्स, दूसरों को बोलना नहीं। वेरी राइटली सेड बाय द अर्लियर स्पीकर कि एक 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 किलो मीट बनाने के लिए 3000 लीटर्स ऑफ वाटर लगते हैं, और 1 किलो सब्जी बनाने के लिए 3 लीटर्स ऑफ वाटर लगते हैं। तो अगर आपने वर्ल्ड को सस्टेनेबल करना है,
अगर आपने अपने रिसोर्सेज सस्टेनेबल करने हैं, द प्रॉब्लम विथ मदर अर्थ इज, इसमें एक ही आतंकवादी स्पीशी है और वो है ह्यूमंस। ये आतंक है, इनके चलते कितने स्पीशीज रोज वीरगति को प्राप्त हो रहे हैं, एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, और हम ऐसे जी रहे हैं जैसे देयर इज नो टुमारो। और जो लोग कहते हैं कि इट्स ओनली वन लाइफ, ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर, ये लोग भारतीय नहीं, क्योंकि भारत में इट्स नॉट ओनली वन लाइफ। हम कई बार हम आते जाते रहते हैं, हम आते जाते रहते हैं। इट्स नॉट ओनली वन लाइफ एंड ऑल इज नॉट फेयर इन लव एंड वॉर। इसका हिंदी क्या है? हिंदी ये है, इश्क और जंग में सब जायज है। ना इश्क हिंदी का वर्ड है, ना जंग हिंदी का वर्ड है। युद्ध के नियम होते हैं, जिनीवा कन्वेंशन से पहले महाभारत में नियम थे, इसके नीचे कोई वार नहीं करेगा। पैदल पैदल से सिर्फ युद्ध करेगा, रथी रथी से करेगा, महारथी महारथी से करेगा, उसके नीचे नहीं आएगा। शाम को युद्ध बंद हो जाएगा। जिनीवा कन्वेंशन को बहुत कुछ सीखना है अभी, भारतीयों से बहुत कुछ सीखना है अभी, बहुत कुछ। इसलिए कि हमें ठीक से मालूम नहीं है कि इन बातों को बाहर के लोगों को प्रोजेक्ट कैसे करना है, हमें नहीं पता है। इसीलिए हम एक वैक्यूम में जी रहे हैं। जैसे लगता है कि नहीं, सारा नॉलेज तो अमेरिका में ही है, हम तो ऐसे ही स्टूपिड लोग ऐसे ऐसे ये करेंगे, अमेरिकन डिग्री होगा तब हमें नॉलेजेबल समझा जाएगा, अदरवाइज तो हमारे पास नॉलेज ही नहीं है। ऐसा सोचने वाले लोग, बहुत अच्छा है कि धीरे धीरे कम हो रहे हैं और धीरे धीरे भारतीय भारत की तरफ रुख कर रहे हैं। और वो टाइम बहुत जल्दी मुझे दूर क्षितिज में दिख भी रहा है। इन द नेक्स्ट 10 to 15 years रिवर्स माइग्रेशन होगा, लोग भारत आने के लिए लालायित होंगे। आज कहां सेफ महसूस करते हैं आप? जो विश्व में चल रहा है सबको पता है, कहां सेफ महसूस करते हैं आप? भारत में। ये भारत है। एनीवेज, तो कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, आप देखिए, अगर आप ये सब कुछ खाएंगे, ये जो लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है ये नॉर्मल आर्टरी है, जो व्हाइट आपको दिख रहा है दैट इज द कैलिबर ऑफ द आर्टरी, ये ट्रांसेक्शन मैंने किया है। और जो राइट साइड में आपको ये दिख रहा है, ये खाए पिए परिवार से हैं। इनका वो व्हाइट वाला दिख रहा है क्या? इसी को एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, द बेसिस ऑफ ऑल डिजीजेज। चाहे वो हार्ट अटैक आ रहा है, चाहे वो कैंसर आ रहा है, चाहे आपको कोई भी बीमारी है, क्यों है? क्योंकि आपकी आर्टरी से ब्लड फ्लो करने की स्थिति ही नहीं बनी है, आपके जुबान पे लगाम नहीं था, और नॉर्मल बोल बोल के आपने इतना खा लिया। और किसको नॉर्मल बोलते हैं? नॉर्मल इज अ कंपैरेटिव टर्म, इट्स नॉट एन एब्सोल्यूट टर्म। नॉर्मल विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? मैं तो मैं तो नॉर्मल भोजन करता हूं। नॉर्मल, व्हाट डू यू मीन बाय नॉर्मल? वो व्हाट डू यू इवन मीन बाय दैट? तो आप अगर थोड़ा थोड़ा चेंजेस करेंगे तो रेडिकल चेंजेस नहीं आएंगे हेल्थ में। और ऐसा नहीं है कि आपको भरपेट नहीं खाना, भरपेट खाइए, लेकिन 2 ही बार खाइए। अगर आप 2 बार खाते हैं, और यकीन करके चलिए, आप आज शाम को ही देखिएगा, 5 बजे शाम को भोजन कर लीजिए, आपकी बहुत सी व्याधियां कम हो जाएंगी, रात को पार्टियां कम हो जाएंगी, दारू कम हो जाएगा। ये सभी चीजें, आप टाइम से सो जाएंगे, सुबह टाइम से उठेंगे ब्रह्म बेला में, अपना हेल्थ ठीक रखेंगे, और रात को भूख डेफिनेटली नहीं लगेगी। आप 5 बजे शाम को पूरा भोजन करके देखिए, सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं। ये भारत की पद्धति है। जब तक हम नहीं आएंगे तब तक ये एथेरोस्क्लेरोसिस चलता रहेगा, हार्ट डिजीज चलते रहेंगे, हार्ट अटैक्स चलते रहेंगे, बाईपास सर्जरी चलते रहेंगे। एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग कि आपको अपनी जुबान पे लगाम लगाना है और भारतीय बनना है। 2 जून भोजन पे आ जाना है, आप बहुत सी चीजें डिफीट कर देंगे। डायबिटीज हम कैसे ठीक करते हैं? डायबिटीज इज नॉट अ ब्लड शुगर डिजीज, इट इज अ डिजीज ऑफ हाइपर इंसुलिनीमिया। हाइपर इंसुलिनीमिया क्यों होता है? आप जब भी कुछ खाएंगे, पैंक्रियास से इंसुलिन निकलेगा, बार बार निकल रहा है, तो वो हाइपर इंसुलिनीमिया हो जाता है।
इंसुलिन को मेटाबोलाइज कौन करता है? बॉडी करती है। आपके पास कोई ड्रग नहीं है मेटाबोलाइज करने के लिए। बॉडी 7.5 घंटे लगाती है एक स्पाइक को मेटाबोलाइज करने में। अगर आप 2 स्पाइक ही लेते हैं जो 8 घंटे के गैप में देते हैं, तो फर्स्ट स्पाइक जो आपने फर्स्ट टाइम खाना खाया, 1 घंटे के अंदर जो भी खा लिया आपने, 7.5 घंटे बॉडी लेती है उस इंसुलिन को नीचे लाने के लिए, तब जाके द बॉडी इज रेडी फॉर द सेकेंड डोज ऑफ फूड। तो अगर आप 7.5 घंटे का गैप देते हैं, नॉट ओनली डायबिटीज, बहुत सी बीमारियां आप बीट कर देंगे। सिर्फ इतना ही टेक होम मैसेज लेके जाइए, आप देखिए आपका पूरा जीवन बदल जाएगा, पूरी सोच बदल जाएगी, सोचने का तरीका बदल जाएगा, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन। अगर आपके अन्न में किसी की आह छुपी है, वो आपके मन को दूषित करेगा। जब तक ये बात नहीं समझ में आएगी, तब तक आप सोचेंगे नहीं नहीं ये तो वैदिक बात है, ये ये प्रैक्टिकल बात है जो आपने कभी सोची नहीं। आज से सोचना शुरू कर दीजिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो 1 kg साइंटिफिकली प्रूविंग। बहुत लोग ये बोलते हैं कि नहीं आप साइंटिफिक नहीं है, तो ठीक है, आइए जरा साइंस पे बात कर लें। तो साइंस क्या कहती है? एक 1 किलो ब्रोकली और एक 1 किलो मटन, एनर्जी किसमें ज्यादा है, एटीपीज किसमें ज्यादा है, किसमें ज्यादा कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन है? चलिए प्रोटीन की बात करते हैं, क्योंकि प्रोटीन का शौक है लोगों को। तो प्रोटीन किसमें ज्यादा है, 1 किलो ब्रोकली में कि 1 किलो मीट में? सरप्राइज हो जाएंगे आप। 1 किलो ब्रोकली में ज्यादा प्रोटीन है। आप ठीक से साइंस देखिए। जो लोग जिम्स जाके प्रोटीन पाउडर खाते हैं, उनको यह जानना जरूरी है दैट द मसल बिल्डिंग is not by proteins. That is not science. That is somebody is trying to sell you something. Muscle building is by carbohydrates. ठीक से साइंस पढ़िए, ठीक से साइंस पढ़िए और ठीक से समझिए, और ये समझिए कि ये वर्ल्ड सेलिंग वर्ल्ड है। लोग सामान से लेके बहू बेटियों तक बेचते हैं। ये सेलिंग वर्ल्ड है। सेलिंग टेक्निक सिखाए जाते हैं, बेसिक्स फिर भी नहीं बदलते। तो हमें बेसिक्स पे आना पड़ेगा, तभी जाके हेल्थ ठीक रहेगा और ये वर्ल्ड सस्टेनेबल रहेगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। देखिए ये जो आपको जो ये सिग्नेचर्ड दिख रहा है, वेयर इज द स्लाइड? या सो अगर ब्रेन आपका काम नहीं कर रहा है या डिमेंशिया है, तो क्या नेचर ने कोई चीज ऐसी बनाई है जो ब्रेन जैसी दिखती है? अखरोट है ना, दैट इज नेचर सिग्नेचर ऑन फूड। ये जो बादाम आपको राइट साइड में दिख रहा है, इसको आप पानी में भिगा लेंगे तो इसमें लाल लाल आर्टरीज दिखेंगे आपको। कभी फोटो खींच के रख लीजिएगा फॉर फ्यूचर रेफरेंस। बादाम को भिगा के रात को सुबह उठा के एक फोटो खींच लीजिएगा, आपको बात समझ में आ जाएगी। इसमें आर्टरीज दिख रहे हैं। तो अगर आर्टरी आपकी ब्लॉक है, तो नेचर आपको सिग्नेचर्ड वे में बता रहा है। आपको क्या लगा नेचर आपको फोन करके बताएगा? क्या आपको ब्रेन नहीं दिया है? क्या सोचना नहीं है? सो दीज आर नेचर सिग्नेचर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट। यस, सो न्यूट्रिशनली ब्लाइंड, वी आर लिविंग इन अ न्यूट्रिशनली ब्लाइंड वर्ल्ड। मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स, अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ द हीलर्स आर न्यूट्रिशनली ब्लाइंड। इसमें मैं न्यूट्रिशनिस्ट का भी नाम लूंगा। न्यूट्रिशनिस्ट आपको एक न्यूट्रिशन का चार्ट बना के देते हैं, पनीर इतना खा लीजिए, चिकन इतना खाइए, ये खाइए। वो रॉन्ग लर्निंग है। न्यूट्रिशन कॉलेजेस न्यूट्रिशन कॉलेजेस आर रन बाय द फूड इंडस्ट्री, और फूड इंडस्ट्री इज अ बिजनेस इंडस्ट्री। वो हमेशा अपना काम और बढ़ाना चाहेगी, तो अपने एम्बेसडर्स बनाती है वो, ताकि हम एनिमल मीट, एनिमल प्रोटीन्स, एनिमल चीजें बेच पाए। एनिमल की चीजें खाएंगे तो एनिमल जैसे बन जाएंगे, प्लांट जैसे बनिए और इससे सीखिए। गौतम बुद्ध ने बुद्धत्व बोधि ट्री के नीचे प्राप्त किया था, क्योंकि पेड़ उर्वरता होते हैं, एनर्जी ऊपर की तरफ मूव करता है, इसीलिए पेड़ ऊपर की तरफ मूव करते हैं। उनसे सीखिए और एनर्जी लेवल अपना ठीक करिए। एनीवे, वी आर लिविंग इन अ न्यूट्रिशनली ब्लाइंड वर्ल्ड।
न्यूट्रिशनली ब्लाइंड का मतलब है 6 डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ डॉक्टर्स, कुछ नेचुरोपैथ हैं, कुछ एलोपैथ हैं, कुछ होम्योपैथ हैं, कुछ आयुर्वेद है। इनको अगर एक रूम में आंख पे पट्टी बांध के रख दिया जाए और एक डिजीज को भेज दिया जाए, इट इज लाइक एन एलिफेंट इन द रूम ऑफ ब्लाइंड पीपल। जो उसका पूंछ पकड़ेगा वो बोलेगा ये डिजीज जो है ये तो एक रस्सी जैसा है। जो उसका पैर पकड़ेगा वो बोलेगा ये तो एक खंबे जैसा है, तुम गलत बोल रहे हो, ये तो एक खंबे जैसा है। जो उसका सूंड पकड़ेगा बोला तुम लोग दोनों गलत हो, ये तो सांप जैसा है। वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम डिजीज। अपना अपना दृष्टि और अपनी अपनी दृष्टिकोण है, और चूंकि दृष्टि पे पट्टी लगा हुआ है इसलिए सिर्फ दृष्टिकोण ही रह गया है। दैट इज वाई आई सेड वी आर लिविंग इन अ न्यूट्रिशनली ब्लाइंड वर्ल्ड। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यस, सो दिस इज द बेसिक मेटाबॉलिज्म। बेसिक मेटाबॉलिज्म ये है कि एक शुगर का मॉलिक्यूल 36 एटीपी देता है एरोबिक रेस्पिरेशन में। अगर आप हवा ज्यादा लेते हैं तब, अगर यही रेस्पिरेशन एनाएरोबिक चला गया, इसी को कैंसर कहते हैं। आप जल्दी जल्दी सांस ले रहे हैं, दूसरों से घृणा करते हैं आप, तो आप जल्दी जल्दी सांस लेंगे, आपका ऑक्सीजन लेवल कम होगा अंदर, और कम होगा तो जो शुगर आप खाएंगे वो लैक्टेट में चला जाएगा। 2 एटीपी मिलेगा, एनर्जी मिलेगा ही नहीं। इसमें 36 एटीपी मिलता था, उसमें 2 एटीपी मिलेगा, और कैंसर। आश्चर्य की बात है, अगर आपको कैंसर नहीं होगा, होगा ही जब तक हम ये मेटाबॉलिज्म सुधारेंगे नहीं। मेटाबॉलिज्म को हिंदी संस्कृत में जठराग्नि कहते हैं। 2 अग्नि है, और इनफैक्ट अग्नि को देखने की स्थिति भारतीयों की और बाकियों की बहुत फर्क है उसमें। हम कोई भी चीज जो ये मनाते हैं वो अग्नि बुझा के नहीं मनाते हैं, अग्नि प्रज्वलित करके मनाते हैं। ये भारत में और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में फर्क है, क्योंकि अग्नि जलने की चीज नहीं है, चैतन्य के जागृत होने की चीज है अग्नि। आपकी जठराग्नि है, आपकी ज्ञानाग्नि है, इससे आप बने हैं। जठराग्नि को भी बढ़ाइए, ज्ञानाग्नि को भी बढ़ाइए, इसी को भारत कहते हैं। भा मतलब भास्कर, प्रकाश। प्रकाश में जो कार्यरत रहता है देश, उसको भारत कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यस, सो प्राणमय कोश, वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसके बाद है मनोमय कोश। प्राण 5 तरह के होते हैं, माइट नॉट बी वेरी रेलिवेंट एट दिस पॉइंट इन टाइम। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो नेक्स्ट स्लाइड विल गो टू मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। नेक्स्ट स्लाइड। यस, सो योर थॉट्स अफेक्ट योर सेल्स, ये भी हम बात कर चुके हैं, ऑल्दो थोड़ा खंडित में बात किए, लेकिन आप अगर रॉन्ग सोचते हैं तो वो आपका मनोमय कोश अगर डिस्टर्ब्ड है तो कोई कारण नहीं है कि आपको बीमारियां नहीं होंगी। इसीलिए लोग आजकल डी स्ट्रेस कर रहे हैं और बीमारियां जा रही हैं। मनोमय कोश अगर डिस्टर्ब्ड है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट। तो आनंदमय कोश में आप तब आते हैं, और जो लोग साइंस या साइंस की बातें करते हैं, द हाईएस्ट साइंटिफिक इक्वेशन नोन टू मैनकाइंड। आप वापस स्लाइड्स कहां चला गया? इसके पहले वाले स्लाइड में जाइए जरा। नहीं, एक एक इसके बाद वाला स्लाइड, उसके बाद, या स्टॉप हियर प्लीज। E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, द हाईएस्ट इक्वेशन नोन टू मैनकाइंड, क्योंकि इसके बाद अभी स्ट्रिंग थ्योरी प्रूव नहीं हुआ है। उसको जब नोबेल प्राइज मिल जाएगा, देन विल से दैट स्ट्रिंग थ्योरी इक्वेशन अ बिगर इक्वेशन इज द लेटेस्ट इक्वेशन। उस समय तक E इज इक्वल टू MC स्क्वायर इज द लेटेस्ट इक्वेशन। एक लेमैन को कैसे समझाएंगे E इज इक्वल टू MC स्क्वायर? क्योंकि हम जो बातें कर रहे हैं, आप फोन पे बातें कर रहे हैं, फोन लेके चल रहे हैं, E इज इक्वल टू MC स्क्वायर नहीं होता तो शायद ये संभव नहीं होता। ये एक गहरा स्टेटमेंट है, ठीक से सोचिएगा इसके बारे में। तो E इज इक्वल टू MC स्क्वायर एक लेमैन को कैसे समझाएंगे? एनर्जी और मैस सेम प्लेटफॉर्म पे आ गया, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन था, इसीलिए नोबेल प्राइज मिला इसको। ये मान लीजिए 10 ग्राम का है, मान लीजिए 10 ग्राम का है ये। इस 10 ग्राम को C स्क्वायर का फोर्स लगा देंगे, मैस को C स्क्वायर का फोर्स लगा देंगे। C इज कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट, द स्पीड ऑफ लाइट इज कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट।
So C is taken as cosmological constant. तो C स्क्वायर का फोर्स लगा देंगे तो ये मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा. दैट इज E इज इक्वल टू mc स्क्वायर. और एनर्जी को कूल डाउन करेंगे तो वो मास बन जाएगा. यही मतलब है इसका. इसको और अच्छे से जो लोग अपराविद्या कम जानते हैं उनको अगर सिखाना हो तो कैसे. सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे. E is equal to mc square. Next slide, please. Next slide. So when we talk about integrated medicine, we talk about sustainable health. We talk about is a diagram, complex diagram. कभी हम अगर physically, if I am invited in amity, we will actually come to a cornerstone कि actually करना क्या है. खेती में क्या करना है. माइक्रोबायोम की डेफिशिएंसी आपने मिट्टी में क्रिएट कर दी. मिट्टी में इतना खाद डाल दिया कि माइक्रोबायोम बैक्टीरिया मर गए और अपने अंदर इतना एंटीबायोटिक डाल दिया कि आपके बैक्टीरिया मर गए. तो ना मिट्टी बचेगी ना आप. यू हैव टू रीपॉपुलेट. और 99.9% बैक्टीरिया फ्री मत करिए. आप खुद ही नहीं रहेंगे बैक्टीरिया को मारने में. तो बैक्टीरिया की ताकत पहचानिए. द साइंस ऑफ द माइक्रोबायोम. सब कुछ पलटता जा रहा है. 9 माइक्रोबायोम्स है बॉडी में. अगर वो 9 माइक्रोबायोम्स अगर समन्वय में नहीं रहेंगे तो आप शांत नहीं रहेंगे. इसी को नवग्रह की पूजा कहते हैं. ये जो नवग्रह हैं ये 9 माइक्रोबायोम्स हैं. इनको जब तक शांत नहीं रखेंगे आप खुद शांत नहीं रहेंगे. आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी मीट. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. यस. तो किसको पढ़ाई लिखाई कहते हैं. जो एमिटी में पढ़ रहे हैं वो लोग पढ़े लिखे. जो ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहे हैं वो लोग भी पढ़े लिखे. जो स्टैनफोर्ड में पढ़ रहे हैं वो भी पढ़े लिखे. तो जो लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं वो क्या पढ़े लिखे नहीं है. पढ़े लिखों को नदी दिखती है, बिना पढ़े लिखों को माँ गंगा दिखती है. कौन ज्यादा पढ़ा लिखा है. पढ़ने लिखने का मतलब है यू हैव टू नो द नेचर ऑफ. क्यों पढ़ते हैं आप. टू नो द नेचर ऑफ रियलिटी. नेचर ऑफ रियलिटी. किसी को नदी दिखती है, किसी को माँ गंगा दिखती है. क्यों माँ कहते हैं हम. अन्न हमारा पोषक है और अन्न की पोषक नदियां हैं. इसीलिए नदियों को माँ कहते हैं. ये ज्यादा पढ़े लिखों की कैटेगरी में उसे माँ कहते हैं. मैं तो इसको ज्यादा पढ़ा लिखा मानता हूं. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. सो थैंक यू वेरी मच. एंड द सबसे बड़ा दुश्मन आपका आप खुद है और सबसे ज्यादा कंपटीशन आपको खुद से होना चाहिए. इफ यू वांट टू रियली डिफीट समथिंग, defeat your mind first, then you'll come to that conclusion. Thank you very much, and if there are questions I'll be glad to answer. And I'm sorry, have I overshot the time? नो सर, दैट्स टोटली ऑल राइट. थैंक यू सो मच सर. बहुत ही अच्छा आपने बताया कि किस तरीके से हमारे अन्न के अंदर भी ऑरा होती है दैट वी कैन फाइंड आउट बाय पुटिंग रुद्राक्ष एंड जस्ट इफ इट इज रोटेटिंग इट इन क्लॉकवाइज तो हमारा अन्न शुद्ध है और उसको अन्न पका हुआ 4 घंटे के अंदर ही है. तो ये आपने बहुत अच्छा बोला कि अन्न की ऑरा होती है और हमें इस हिसाब से अपने अंदर इसको लेना चाहिए. कुछ लोगों के क्वेश्चन आए थे सर, वो मैं लेना चाहूंगी इस समय. नीलेश जी ने कहा कि हम तो इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात कर रहे हैं, इनको शायद मोटापा, ये पूछ रहे हैं कि मोटापा बढ़ाया कैसे जाए. हाँ. तो मतलब उनको वेट गेन करना है. मोटापा ना बढ़ाया जाए. वेट गेन की नॉट. वेट गेन हाँ जी. करने के लिए कई और तरीके हैं जो अपार्ट फ्रॉम ईटिंग ओनली. ये 5 कोश से गुजरना पड़ेगा. ईटिंग, अन्नमय कोश बहुत छोटा पार्ट है उसका. तो सबसे पहले आपको मनोमय कोश को शांत करना होगा. प्राणमय कोश को इंक्रीज करना होगा योग करके. और अन्नमय कोश में राइट अन्न डालना पड़ेगा. वेट बढ़ेगा. नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज.
सर एक और हमारे साथ जुड़ी हुई थी सेजल मैडम, वो उन्होंने पूछा है नारियल पानी पीने से गैस बनती है, तो क्या ऐसा है, और अगर बनती है हम्म, तो इसका क्या उपचार है? तो जो मैं बता रहा था, 5 प्राण है बॉडी में। गैस जब गैस की बात करें तो 5 प्राण है बॉडी में। उदान, प्राण, समान, व्यान और अपान, ये प्राण है। अगर आपको गैस ज्यादा बन रहा है तो ये प्राण आपके, नॉर्मली ये जो वायु है, ये आपका समन्वय में नहीं है। समन्वय में करने के लिए इट्स अ वेरी गुड आइडिया। अगर किसी भी चीज से गैस बनता है, अजवाइन का पानी लीजिए, आपका ज्यादातर वायु को वो संतुलित कर देता है। ज्यादातर वायु संतुलित रहते हैं। और अजवाइन का पानी का मतलब है, 1 गिलास पानी लीजिए, उसमें 1 चम्मच अजवाइन डालिए, रात भर छोड़ दीजिए, सुबह में वो पानी पी लीजिए, आप देखेंगे दिन भर गैस नहीं बनेगा। एंड आप नारियल पानी बिल्कुल लीजिए। नारियल के पेड़ को ही कल्प वृक्ष कहा जाता है। कल्प वृक्ष, वृक्ष का मतलब है जो आप कल्पना कर सकते हैं वो भी उसे मिलता है, जो आप कल्पना नहीं कर सकते हैं वो भी मिलता है। जी। सर बहुत सारे हमारे व्यूअर्स लिख रहे हैं कि बहुत आपकी अच्छी टॉक रही, एंड नितिन जी ने लिखा है कि उनका ब्रोंकाइटिस एंड अस्थमा सही हो गया थ्रू यू, सो दैट्स अ वेरी ग्रेट थिंग टू अचीव एट दिस मोमेंट। तो आपने बहुत ही अच्छा तरीके से बताया कि किस तरीके से हम मनुष्यों को एग्जिस्ट करना नहीं आता 8.17 मिलियन अदर स्पीशीज के साथ, और हमारी सारी बीमारियों की जड़ ये पैथोजेंस हैं, चाहे हम बाहर से ले या अंदर से ले, और इसको हम कैसे हील कर सकते हैं खुद से। तो बहुत अच्छा टॉपिक था सर। अवश्य हम चाहेंगे कि फिर से आपके साथ जुड़ें, और फिजिकली भी जुड़ें, और ऑडियंस को हम ले सके, उनके क्वेश्चंस जरूर, ले सके, बट जरूर, समय सीमा के कारण अभी थोड़ा विराम चाहूंगी मैं। जरूर। सर एक क्वेश्चन लेकिन फिर भी मैं पूछ ही लेती हूँ क्योंकि लीवर के पेशेंट्स बड़े होते हैं, तो ये क्या रीजन है कि चाहे बूढ़े हों चाहे बुजुर्ग हों, यंग वंस हों, सबको लीवर की दिक्कत हुई जा रही है? तो हम्म, तो हमने लास्ट वीक ही संडे को हेल्थ शाला में लीवर को एड्रेस किया था। तो मैं जी ये भी जो लोग दर्शक हैं, ज्यादातर मूक हैं, इसलिए मूक मूक दर्शक बोलूंगा मैं। जो मूक दर्शक हैं, मैं चाहूंगा एवरी थर्सडे और एवरी संडे हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और उनसे जुड़े। डॉक्टर अवधेश पांडे नाम है यूट्यूब चैनल का। तो आप अगर सब्सक्राइब करके जुड़ेंगे तो आपको नोटिफिकेशंस आएंगे। एवरी थर्सडे और एवरी संडे हम थर्सडे को योगशाला करते हैं और संडे को हेल्थ शाला करते हैं, और कोई बर्निंग टॉपिक लेते हैं जो वर्ल्ड को प्लेग कर रहा है, जिससे लोगों को प्रॉब्लम है। लास्ट टाइम हमने लीवर को एड्रेस किया था। जो फैटी लीवर डिजीज है, दैट इज द फर्स्ट इंडिकेशन कि आप हेल्दी नहीं हैं, और इतना कैजुअली लिया जाता है। आप अल्ट्रासाउंड कराइए, रेडियोलॉजिस्ट बोलेगा सब ठीक है, थोड़ा बहुत फैटी लीवर है बट दैट्स ओके। ये जो बाद में बोलते हैं दैट्स ओके, ये क्यों बोलते हैं मुझे नहीं पता है। इट्स नॉट ओके, इट इज द ओल्ड, हमें इस पे लगाना नहीं। ये बहुत इंटरमीडिएट पास, बहुत एक, एक मेरा ये है, दो पे आ जाइए एक बार, और भूलना मत। भोजन दैविक खाना एक प्रवृत्ति है, देव होना चाहिए। जी, सो अवश्य सर, हम आपसे फिर से जुड़ना चाहेंगे बहुत सारे बर्निंग टॉपिक्स के साथ, फूड जैसे कि फूड लिवर। ऊपर। हाँ जी, हम आपसे फूड अडल्ट्रेशन पे भी बात करना चाहेंगे, बट अभी थोड़ा सा विराम लेना चाहूंगी यहीं पे, एंड मूविंग अहेड विद अनदर स्पीकर, Mr. Rakesh Jain. Mr. Rakesh Jain is the assistant professor in ECE department of Gitanjali Institute of Technical Studies, Udaipur.
He has done his diploma, BTech, and MTech, and he has vast experience of 11 years in the academics. And so many copyrights, like 27 copyrights, have been awarded to him by the government of India. Right now, he is having 3 patents. He has been awarded Mewar award for having so much of publication in the patents. Mewar Scientist Award, in as well as this was published in newspaper. He has innovated 12 apparatus during Corona times, जो कि हम राजस्थान पत्रिका न्यूज में भी देख सकते हैं. इनका रिसर्च वर्क जो है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इंग्लैंड एंड के लैब साइंटिस्ट के साथ भी चल रहा है. सो आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस्टर राकेश जैन सर to give a talk on electronic environmental sustainability. अब चूंकि सारे लोग हम सभी अकेडमिशियंस हैं, तो किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की आवश्यकता है आज के युग में, हम इस पे थोड़ी देर चर्चा करेंगे. Ma'am, I am audible. यस सर, प्लीज. Okay, first of all, thank you very much for providing me such an opportunity. The platform is very nice, that electronic sustainability for the environmental. First of all, I would like to present my slide. Let me open my slide. सर, हमारे व्यूअर्स थोड़े हिंदी अदर Yes, माताएं हैं, बहनें हैं, और साथ में हमारे कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, तो आई वुड लाइक यू टू टॉक इन इंग्लिश एज वेल एज इन हिंदी. okay, ma'am. Bilingual, I will prefer, but I am unable to load my screen. Why it is? Wait, yes. Kindly wait. Is it visible? Ma'am? No sir, it's not Hello? visible. uh, Yes, Dr. yes, Abha, are please. you there? No. Now? No sir. Yes, ma'am. It's open now, ma'am. It's open now. You can see here. Okay, thank Sir? you. Thank you for your Okay. assistance, Abha ji. Thank you, ma'am. So first of all, I choose the topic electronic environmental sustainability because nowadays we already been noticed about the corona pandemic situation. In that situation, we understand that how a particular thing can affect not only the human beings but also the nature. In that case of corona situations, we understand सर, that corona is थोड़ा इंटरप्ट करना yes. चाहूंगी आपको इस बीच में. Could you please share this in the full screen mode? Yes, wait. Now is it okay? Now is it okay, ma'am? No sir, it's still not coming in full screen mode. Anyway sir, you please continue your talk. Okay, ma'am. So my topic is electronic environmental sustainability. I choose this topic because everything can affect the human beings as well as the here I choose the word electronic environmental sustainability. Those kind of electronic products which made with no toxic chemicals. It must conclude recyclable parts and reduce the carbon emissions from the productions during the time of production. Electronic environmental sustainability
is related with the eco-friendly technology. We can say as green technology or environmental technology that can protect the environment by using less energy and producing less hazardous chemicals during the time of manufacturing. Eco-friendly gadgets encourage the green living, which aids in energy conservation and also help to stop the noise, water and air pollutions. They demonstrate their benefit for the environment and shield the human health from declining. इसका सीधा सा मीनिंग है इलेक्ट्रॉनिक एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी का कि फॉर द इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी वी शुड यूज हमें उस तरह के प्रोडक्ट बनाने चाहिए जिनके अंदर हार्मफुल केमिकल का कम से कम यूज आता हो, जो डैमेज होने के बाद भी एनवायरनमेंट को ज़्यादा अफेक्ट ना करे और साथ ही साथ में एनर्जी बहुत कम हमारे काम में आए उसके लिए, ताकि एनर्जी का कंजर्वेशन हो सके. नाउ this one is my next slide. Advantage of eco-friendly technology. Here there are basic different kind of eco-friendly technology advantage. Like eco-friendly technology is typically safer. Green gadgets have a longer shelf life, lowering the demand for dangerous items and defends the environment. We say eco-friendly technology is typically safer because it is green technology, and regular appliances frequently generate the dangerous compounds that might be detrimental to our health. Green gadgets have a longer shelf life. The short lifespan of non-sustainable product, as we use nowadays, is a frustrating aspect. The case with sustainable gadgets is different. They often endure at least twice as long as their competitors. मतलब अगर हम ग्रीन गैजेट्स यानी इन सस्टेनेबल प्रोडक्ट को यूज में लेंगे तो जो नॉन सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स हैं उनसे दुगनी टाइम तक हम इसको यूज में ले सकते हैं, इनकी लाइफ ज्यादा है. Lowering the demand for dangerous items. Depending on customer demand, business have to decide what to supply. Similar to that thing, as we know, we all know that if I like that, I shall obviously go for it. If I don't like it, I similar to that. If I like to use those kind of things, which is very much usable, then I have to go for those kind of devices. जो हमारे लिए ज्यादा लंबे टाइम तक काम में आए, हम उनको लेना चाहेंगे. और ग्रीन टेक्नोलॉजी, इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स वही है, प्रोडक्ट वही है. It lowering the demand for the dangerous item and defends the environment. The main advantage of the sustainable product is that they are not harmful to the environment. Fewer resources are utilized to produce them, and fewer greenhouse gas emission are emitted into the atmosphere. Also, eco-friendly products are typically recyclable. हम उनको एक बार से ज्यादा बार काम में ले सकते हैं. That's why they can defend the environment. They can therefore be resumed numerous times, conserving even more of our natural resources. Sustainable product manufacturers also frequently have recyclable packaging used for the delivery. Now see the next slide. Why we use the environment? As I have already been told you that we use the environmental friendly product because they are specific. There is a particular specific criteria, that is these technology are easily available and we can make them, and reduction of the energy use is also there. Means energy consumption is there. If I want to use less amount of energy, I have to go for the environmental technology. They also reduce the number of carbon footprints left behind, also known as emission of the greenhouse gases. That is a very dangerous effect, and do not result in a significant amount of toxicity or pollutions. That's why we go for the environmental technology. Environmental friendly technology means green technology. Now, come to the next slide. Eco-friendly products are more worthwhile to purchase and are easy to discard in a way that does not harm the environment. We must immediately begin employing green products to preserve the nature and our green planet. There would be less possibility to save the planet and the world life if we had started now. Yes, as I mentioned,
that green technology is now a contemporary need apart from the conventional use of the electricity and all those kind of electronic gadgets. The problem is the wastage of those electronic gadgets. हम जैसा कि जानते हैं कि हमने पहले कई बार इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को यूज में हम करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे, लेकिन उन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि उनको बनाने के अंदर जो केमिकल्स यूज में आ रहे हैं दे आर वेरी हार्मफुल एट द सेम टाइम्स दे आर it is not easy to destroy them. If there will be no use, then it is very hard to destroy them. That is a problem of the e-waste. The e-waste, every year approximately 40 million metric tons of electronic waste consisting of discarded television, phones, computers, and other electronic hardware are produced globally. Although e-waste only accounts for the 2% of the trash in landfills, it makes up almost 70% of the toxic heavy metals in their landfills. So see this next PPT. This is the complete life cycle of the electronics, which show you how the gadgets comes and use and what will happen after the use. Poorly regulated informal recycling market, as in the Philippines, marketing, Pakistan, China, and these kind of countries. These e-waste, the process to destroy those e-waste is only the shredding or burning, but that is not a particular thing by which we can properly damage it, because that e-waste, whenever it will burn, it will create more carbon emissions during the time of burning, so environment gets affected. These kind of improper disposal methods of e-waste not only negatively affect the health of humans, but also detrimental to all health of the environment. So we should go for the environmental technology. Now the next one is, here there is a simple example of a product. Okay, we know that e-waste is a big problem. As I mentioned earlier, that e-waste is a big problem for us. Now what we have to do, let's suppose for any electronic projects, because my topic is electronic environmental sustainability. So for any electronic gadget or any electronic product, we want to connect a power supply to it, right? That supply may be 5 volt generally DC supply. So okay, I design a PCB layout for the 5 volt supply and connect it to my circuitry. But what happens after that circuitry is not needed? The power supply may be not in use again. So what will happen? It will be discarded completely. There is no use of this. So smartly just use our engineering concept and build those kind of project in which the need of that power supply is not only related with a particular fixed value. Apart from that, we can use it. It must be compatible. It must be compact in size also. So here there is a small product which I developed earlier, whose design is also awarded to me. That is a compact power supply. That project is also published in the EFI magazine. Here there is a small image of that project. Now coming to the next slide, rechargeable batteries. Rechargeable batteries play a vital role. Batteries always play a vital role in our vita nowadays. They are the part and parcel of our life nowadays. So those rechargeable batteries allow numerous use to be had out of a single cell, which help cut down on waste and in general provides a better return on investment or the long run in terms of money spent and we can say valuable gadget time. These lithium rechargeable batteries are highly, approximately 90% or so, recyclable and thus much less wasteful to the environment. As we use conventionally the alkyne and carbon, that is 9 volt battery I'm talking about. So those are of only the single use, and after they are a part of the e-waste only, and they are not recycled. So they add a lot of our trash pile quickly. Even 3.3 volt silver button cell can be recycled for a metal, but this is also not practical. I'm talking about those batteries in this topic because we don't know that how much the battery disposal affect the environment. Improper disposal of those battery actually affect the environment 28 times impact is there. But those rechargeable batteries have 28 times less impact on the global warming, 30 times less impact on the populations, and a 9 times less impact on the air acidification.
and 12 times less impact on the water pollution. They are just the data which is available on the Google also, we can easily see there. So rechargeable battery also plays a vital role for the success of the purity of the environment. Now the next slide is, yes, solar panels. We all know that solar energy, that is known as solar energy, is directly related with the our household. It is now a part and parcel, and it is a main thing which we should use. We should go for this kind of technology. Solar cell is what? Because we know that everything is related with the use of power supply, and we just convert either in the terms of AC or either in the terms of DC, but we should go for the power supply. Electronic gadgets used the DC supply, but first coming the AC should be converted into a DC power supply. Those kind of power supply actually collecting the fossil fuels for electricity, that is responsible for damage to certain local ecosystem. Many planets and animals suffers due to this, as habitats are destroyed and flora is removed to create space for energy operations such as drilling infrastructure. Alternatively, we can say clean energy source like solar can help ecosystem flourish once again. The installation of solar plates require much less space and can be installed on top of the building. It can be easily installed. So solar plays a very significant role for the environmental sustainability. When solar panels are used to generate power, there is absolutely no emission of the carbon gases, carbon compounds, no emissions of the gases that contribute to global warming. So we can save the environment. This makes the solar electricity one of the most critical energy source. One of the most promising way to reduce our reliance on energy derived from fossil fuels by the year 2050 in India is to use solar energy technology. Now we all aware about the solar energy, and nowadays every power system is now converted into the related with the solar systems. Now see the next slide. These are general benefits of the that solar energy. One is it is better for the environment. The second thing is solar system helps with land use. As I mentioned earlier, that many traditional forms of electricity require a significant amount of space for energy plants, including a lot of valuable land also. Fortunately, solar system don't have to same land use requirement. The benefit of solar system is they can be mounted on your roof and placed in a remote area with barren land. It means we don't require any land. There is no land requirement, so we can easily install them on the top of the floor or top of the roof. Or local environment can benefit from the minimal land use solar system requires. The third one is the solar system don't release the pollutants. As I mentioned here, solar reduce actually the carbon emissions. Unlike the fossil fuels, which require mining, drilling, transporting, and burning to produce electricity, solar panels are renewable energy source and don't release the harmful carbon emission that damage waterways and the atmosphere. These pollutants are also damaging to the health of wildlife and ourselves also. So not only the environment, but also they affect our health issues. So we should understand these kind of requirements and we should go for this thing. कहने का मतलब बहुत सीधा सा है कि पहले जो हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज में करते थे वो फॉसिल फ्यूल से हमें मिलती थी, पेड़ों को काटने से बनती थी, लाइट और पानी की उसमें रिक्वायरमेंट थी, और उसकी वजह से हमारा एनवायरनमेंट अफेक्टेड होता था. लेकिन सोलर सिस्टम अगर हम यूज में लेते हैं तो ना तो हमें ज़्यादा जगह स्पेस की ज़रूरत है, क्योंकि सोलर को इजीली हम अपने टॉप ऑफ दी मकान या छत या बिल्डिंग के ऊपर लगा सकते हैं और इजीली इसको यूज में ले सकते हैं. इसका लाइफ टाइम भी अच्छा होता है. दूसरी बात, इलेक्ट्रिसिटी का जितना कंजप्शन हम करते हैं उस पर अफेक्ट पड़ता है. तीसरी चीज कि इससे कोई कार्बन का एमिशंस नहीं होता, जो कि जनरल इलेक्ट्रिसिटी के केस में होता है. तो हम अपने एनवायरनमेंट को हम सेफ रख सकते हैं. So if we go for the sustainability for the environment, we should use the solar system. In a nutshell, I want to say this one. Now the next come for the next slide, the garbage monitoring system. As we know, nowadays in India, it is very popular that the garbage should be that we should clean our city. Nowadays, after the Swachh Bharat Abhiyan, we all know about this thing. But still, garbage monitoring system plays a crucial part
for the environmental sustainability, because if the garbage is not collected regularly, it becomes a good place for breeding of our housewiles, and it will make the place hard, because it will be comprising of material which will start to decompose, and dreadful smell will be covered all over the area. गार्बेज को हमें कचरे को सही से डैमेज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करा तो हमें उसकी गंध से हम परेशान हो सकते हैं, एनवायरनमेंट अफेक्टेड हो सकता है, और एयर पोल्यूशन भी बढ़ता है. सो देयर शुड बी गार्बेज मॉनिटरिंग सिस्टम. आई यूज दिस स्लाइड हियर बिकॉज गार्बेज मॉनिटरिंग सिस्टम कैन बी इजीली, we can make the project, and I have already been made that project, the garbage monitoring via the IoT. So it can monitor that it is filled or not. After filling, it will send a message automatically. With the help of internet, we can control this one, and it will separate automatically the plastic part, the solid part, and these kind of things. I have already been mad. That's why I use this slide here, garbage monitoring system, because it also affect, it is necessary for the environmental sustainability. Now the next one is, yes, the next one is smart plugs. As we know that smart plugs, these are what, smart plugs are useful because they are teeny gadgets. They attach between an appliance plug and an existing outlet, turning on and off the device power at the user's command. It means what? Whenever we need to switch off any appliance, with the help of these smart plugs, we can switch off this. We can disconnect the appliance with the switch. So what will happen? We can save the electricity, right? So an electricity saving is also related with the environmental sustainability, because energy is also part of the environment. By reducing the phantom power, smart plugs predicted to save between 1 and 4.58% of energy, or 500 to 1000 kilowatts. It means what? And in a very simple language, जैसा कि हम जानते हैं घर पे अगर हम 40 वाट का फैन और 60 वाट की ट्यूब, सॉरी 60 वाट का फैन और 40 वाट की ट्यूबलाइट को अगर यूज में लेते हैं, बहुत सिंपल से समझिए आप, अगर वो लगा, यानी टोटल हो गया 100 वाट, अगर वो 100 वाट हम 10 घंटे तक यूज में लेते हैं, इसका मतलब 1000 वाट. जब हम 1000 वाट को कंज्यूम करते हैं, तो उसे जाना जाता है 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, और 1 यूनिट मतलब अप्रोक्सीमेटली 10 रुपीज, राइट? सो अगर हम इस तरह से स्मार्ट प्लग्स काम में लेंगे, जो जब जरूरत नहीं है उसको बंद कर दे, चाहे उसके साथ में सेंसर्स लगा दें हम, टेम्परेचर मॉनिटर सेंसर्स, चाहे उसके साथ में ह्यूमिडिटी सेंसर लगा दें, चाहे हम कोई टाइमर लगा दें, जैसा कि एसी के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है, तो इनके इनके थ्रू क्या होगा, कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे हम उनको स्विच ऑफ कर सकते हैं, राइट? कमांड देके कर सकते हैं, या ऑलरेडी टाइम इंटरवल अगर सेट किया तो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगे. सो क्या होगा, एनर्जी कंजप्शन कम हो जाएगा, और इलेक्ट्रिसिटी की सेविंग हमारी बढ़ेगी, और एनवायरमेंटल के अंदर सस्टेनेबिलिटी में हम एक इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकते हैं, राइट? सो द नेक्स्ट वन इज, now next one is eco-friendly printers, eco ink, because we know that ink also contains some carbon particles, those which always use, those kind of persons whose part and parcel is these kind of printers, then that printers also affect the health, because the ink of that printer is very very crucial for the health. So eco inks in a non-polluting substitute for environmentally friendly printing should be used. These inks are made using organic, say, and veggie components. So it means these kind of environmental friendly components, if used for the manufacturing of the ink which is used in our printer, then the printer becomes eco-friendly printers. But it will reduce the emissions of the carbon particles, reduce the hazardous chemicals particles in the environment, and also less affected the human health. Here it is, I use this PPT eco-friendly printers mostly for the human health issue. Now the next one is energy saving switch and the intuitive eco-friendly charger. Yes, we know that we always use the different kind of charging systems, right? The energy saving switch is a crucial part for the environmental sustainability, because the energy saving switch is a kind of technology that enables hotels actually to save a significant amount of energy. Now, generally, it is used nowadays in hotels. So I use the term in hotels.
Otherwise, we can use at our home also, but it is costly. There is everything contains some pros and cons, so it contains cons of high cost. So a smart card is present, and removing it will cause the energy connection to the specific room to be cut off after a brief period. It means what will happen whenever I want to use, then and don't want to use, then just I remove that card and automatically the electricity of a particular room will be switch off. So energy will be saved, and if energy saving, that is environmental sustainability also. Now the eco-friendly charger, we don't know that how much carbon dioxide, that is also known as a greenhouse gas, contribute for the global warming is produced in a large quantity by the smartphone charging. We know we always use the charger to charge our smart mobile phones, but it emits the carbon dioxide, which is also a greenhouse gas, and it affect the environment. But if you go for the eco-friendly chargers, then using the eco-friendly charger that utilize energy produced from renewable resources like sun, air, acceleration, making them more environmentally friendly. So they are a good thing for the battery charging. Then the next one is, now, apart from these electronic gadgets only, we can also go for the at the home appliances also for the environmental sustainability. Here I use a method of the start compositing at our homes. Some well known as eco gadgets for the kitchen are composed tumblers, composed bins, composed containers, and composed turners. Composed bins come in various designs, including the earth engine double bin, coated mesh wire bin, and covered bridge organic hot bin, because it can array the compositing material. A composed tumbler simplifies the job. The composed tumbler is a helpful because it takes more efforts and time to turn over a composed heap or stir a composed barrel with a fork. So in a nutshell, I just want to use the term that what kind of gadgets, electronic gadgets, or what kind of electronic technology we should use, that is with the help of smart switches, and that is energy saving switches, with the help of those solar panels. So we have to go for the solar panels for the energy, and using the green charger, we can say eco-friendly chargers. We by using these kind of product, and also recyclable things should be there whenever we don't want to, because e-waste is a very very big problem. So we should go for those kind of product, those kind of projects. We should build those kind of projects that is eco-friendly in nature, and also they are recyclable. So if recyclable will be there, then e-waste problem will be surely solved. So in a nutshell, at last I just want to say uh, that as a conclusion of this my lecture, I just want to say that it is up to each of us to contribute to reducing energy waste and changing our destructive behaviors. One approach is making our homes eco friendly. We should consume fewer natural resources and do not go for the energy wastage. And at last, I also want to say, congratulate myself by hearing the Pandey sir lecture, because sir say about certain things related to the not eating at the night, and by default I am by luck I am hail from the Jain community, so do not eat at late night. And I understand the today that scientific things is what is the scientific science behind this. So thank you very much. So Dr. Shweta, am I audible to you? Yes, sir, you are perfectly audible, and thank you so much, sir, for such a wonderful talk on environmental sustainability, which is very critical facet nowadays in order to minimize the environmental impact of electronic devices and system throughout our life cycles. So, very much one of the most burning topic, that how we can reduce e-waste मैनेजमेंट कैन बी डन. आपने बहुत अच्छे से बताया कि वाया द स्मार्ट डस्टबिन्स एंड your projects which you are taking up, like the solar panels, we can use them. So thank you so much, sir, for such a very nice innovative good talk.
about the environmental sustainability. Now I would be calling Major General S.C. Jain sir for giving the vote of thanks and the remarks to the audience over here. Good afternoon, everyone. On Before the outset, before before moving, I would sir has a very shortage of time, so sir quickly briefly just give the vote of thanks, sir. Sir has done. He is the alumni of the BITS Pilani and IIT Kharagpur, and he has a vast of knowledge and in the innovation and research work. So sir, kindly give the vote of uh, thanks. thank you very much, Dr. Shweta. On the outset, I would like to thank the illustrious speaker, Mr. Rakesh Jainji, Dr. Avdesh Pandey, Dr. Shanendra Mandan for their deliberations and igniting the minds of everyone on the vital issue that how we can sustain, because sustainability is a very interconnected subject, and we all have to work together, and the synergy will definitely be the potent weapon in combating and harnessing the humanity at large. Without taking much of the time, I would like to place on record my sincere thanks to the illustrious speakers and all the participants who are there since morning and listening and deliberating on this thought process which has been initiated now. And I'm sure the take homes from this sessions are going to further lead to various research, and it will put a seed, because the education per se, if we can instill how we can sustain our mother earth, so the very initiation is very thoughtful. I congratulate Dr. Sheta for initiating this particular program, which has given rise to not many thought processes. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you, Dr. Shweta. Over to you. Thank you, Thank sir. you. Thank, thank you so much, sir, for giving your precious time. And thank you, audience, for joining us today. We'll be bringing such burning topics once and again. So, thank you all.